वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग शिखा मैम को देख पा रहे हो. बाय द वे, शिखा मैम इज फैकल्टी एट C2C एंड शी टेक्स केयर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. ये स्नैप वर्कशॉप होने वाला है एंड शी विल बी टीचिंग यू लॉजिक एंड लिटिल बिट ऑफ क्वांट्स आल्सो, बट मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग की शॉर्टकट्स हम कवर करने वाले हैं. शिखा मैम, ओवर टू यू. Yes, thank you, Ketan sir. Hello, everyone. Very good morning. Hope you all are geared for the snap, right? So today we will be covering the snap. Especially our focus will be on the logical reasoning and all different types of shortcuts which can help you to save your time in actual exam, right? So yes, most welcome and stay tuned for the next 2 hours at least, right? So the flow of the session will be more or less question oriented. I will be fastly throwing you the questions and the answers will be expected from you first of all. And then we will have the discussion, of course, with the help of shortcuts, right? So let's quickly start with the very first question in front of you, okay? Hardly 30 to 40 seconds I will be giving you, right? Because I'm just hoping that till this time, all of you are very much ready with all sort of preparation, correct? So just show it to us and give your best. You can post your answers in the chat box. So this question is mainly focusing on the Venn diagram. So I would be just expecting answers from you. Okay, I hope all of you are able to solve it, Hannah. Still, we will just have the discussion so that if there is any correction is required, if there is any shortcut is there, we can definitely have a look at it. So basically, they are talking about a particular class which has 50 students with them, right? So if we just try to find out the total number of students, this is, let's say, 50, we can say. Now 23 are speaking English, so we can have one set for English with 23 members. 15 are speaking Hindi, so there are few members who can speak Hindi as well as English, so overlapping could be there. So for example, total Hindi we have 15 and 18 can speak Punjabi, so there is one more, that is, this is basically a 3-set diagram. This is for Punjabi, which is 18. Now, 3 can speak only English and Hindi, okay? So just focus on this, that only 2 languages are permitted initially. They have clearly given us that only English and Hindi for 3. So this point they are referring to, okay? English and Hindi ka intersection, correct? So we can say it is allowed for 3 members. Another 6 can speak only Hindi and Punjabi. So common part between Hindi and Punjabi is showing for 6 members. And 6 can speak again only English and Punjabi. So English Punjabi mein aa jayega 6. If 9 can speak only English, so this part refers to only English. I'm not getting into the basics as of now because हमें booster session है, ये workshop session है. So it is expected कि थोड़ा बहुत basic पता होगा. हम directly shortcuts पे jump कर रहे हैं. Immediately कल ही है snap का exam second slot and next slot will be in the upcoming week, that is on next Sunday. So I'm just assuming कि basic सबके हो गए, shortcuts फटाफट pick कर रहे हो आप लोग, right?
So they are asking how many students can speak all the three languages. All the three languages मतलब ये जो common part है तीनों circles में, तीनों sets में, उसकी बात हो रही है. So it's very simple. 23 total है. यहाँ पे 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया. 9 plus 6 is 15. 15 plus 3 is 18. अगर मुझे 23 total चाहिए तो जो balance बचेगा that should be with this part. So balance is 5. Perfect. Quickly let's move on to the next. मिक्स एंड मैच टॉपिक्स है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक वेन डायग्राम का या एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन आया तो आगे 2-3 क्वेश्चंस उसके आएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. एज गुड एज द एग्जाम. ओके, एग्जाम में भी कैसे सारे मिक्स एंड मैच टॉपिक रहते हैं. डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा छोटा, मॉडरेट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से होता है. तो द सेम अप्रोच वी हैव केप्ट टुडेज for today's workshop. So yes, quickly give it a try, read the question carefully and attempt this, and then we will have the discussion about it. ओके, आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट सबने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, है ना. सो आपके आंसर्स डेफिनेटली आंसर्स मस्ट बी रेडी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. So Aruna cuts a cake into 2 halves, right? So and cuts 1 half into the smaller pieces. Okay, so for example, अगर कोई केक है, let's say like this. So उसने हाफ कर लिया पहले तो, right? इस तरह से हाफ करो या इस तरह से करो, right? Vertical या horizontal cut. So smaller pieces जो half है, उसके smaller pieces are equal in size. So each of the smaller piece is of 20 gram. Okay. So यहाँ पे मान लीजिए 6 उसने पीसेस किए और वो सारे के सारे 20 grams के हैं. So they are asking if she has 7 pieces of the cake in all. Okay. तो यहाँ पे ऊपर 6 है और नीचे ये बड़ा वाला एक पूरा 1 है. इस तरह से टोटल मिला के 7 pieces आएंगे. So how heavy was the original cake? Correct? So ऊपर अगर 6 छोटे छोटे pieces है, those are 20 grams each. तो मतलब 6 into 20, this will be nothing but 120 grams. But my dear friends, we cannot mark option number 1 because उन्होंने total cake का weight पूछा है. ये तो सिर्फ आधा ही केक है. It's only half of the cake which got cut into the 6 smaller pieces. As it is, there is one more piece है ना, जो कि बड़ा सा remaining half है. So अगर इसका weight 120 है तो remaining half का भी weight 120 ग्राम होगा. भले ही वो एक बड़ा सा ही piece है, but it's also part of cake. So total we can say 240. Here I would just like to give you one tip, है ना. Sometimes in the exam what will happen, 20 gram each है तो आप 6 pieces का एक तो 120 ग्राम मतलब एग्जाम प्रेशर में, टाइम प्रेशर में आप गलती से मार्क कर दोगे, इवन दो इट्स ऑलरेडी देयर इन द ऑप्शन भी, है ना. तो वो मिसगाइड हो सकता है. Also there is a common mistake जो स्टूडेंट्स जनरली कर देते हैं. उन्होंने बोला है कि टोटल 7 pieces are there, है ना. If 7 pieces है, हम लोग अज्यूम करते हैं 20 ग्राम का एक पीस है, 7 ले लो, 140 हम लोग मार्क कर देते हैं. तो ये चीज भी हमें
मिसगाइड कर सकती है, और एग्जाम प्रेशर में ऐसे सिली मिस्टेक्स, ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है. सो जस्ट बी केयरफुल. ओके, कभी कभी ये भी मिस्टेक हो सकता है कि आप सारे के सारे 7 पीसेस को मान लीजिए 20 ग्राम के हिसाब से आप 140 कर देते हो, और अज्यूम करते हो कि वैसा की वैसा सेकेंड हाफ ऑफ द केक भी है, तो 140 प्लस 140 अगर आप करोगे तो आपके हिसाब से आंसर आ जाएगा 280. तो ये सारे चीजें, सो स्नैप में जनरली ऐसा होता है कि सारे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट है ना, वो सारे ऑप्शंस भी वो रखते हैं, तो जिस वजह से ऑप्शन मैच हो गया तो हमें लगता है आंसर तो करेक्ट ही होगा. सो जस्ट बी केयरफुल है ना, just focus, understand the question carefully and then try to attempt it. Okay, so otherwise क्या होगा, सिली मिस्टेक हो गई तो जो वो क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा ही होगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी अफेक्ट करता है. So just be smart enough, okay, by solving it. Okay, quickly, very simple question is in front of you. I would just request you to solve it and then we will proceed further. Okay, so here they have just coded the alphabets with different numbers, right? So if P is coded as 6, J 4, L 8, M is 24. So they are asking this M multiplied by J divided by L plus J, है ना? इसका हमें simple mathematical calculation देना है, nothing else. So where M stands for 24, this multiplied by J stands for 4. अब डिवीजन में है तो L का वैल्यू लिख लेते हैं, this is L is 8 and the plus again J stands for 4. अगर हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, then 3 into 4 will be 12 and finally ये plus 4 तो है. Answer supposed to be 16. But क्वेश्चन काफी सिंपल है. यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड. मोस्टली जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है ना, वो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड पे ही रखे वो, है ना, या फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो. सो आपका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए इन एंटायर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कोई भी 4 5 6 7 क्वेश्चंस होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट, है ना. Easily you can just read it out and easily you can attempt it. But to reach to that question, आपको पहले जो भी क्वेश्चंस है आपके वो अच्छे से विद इन टाइम सॉल्व करना चाहिए, वो भी स्ट्रेस फ्री, है ना. तब जाके आप ये सारे सिंपल वाले क्वेश्चंस को भी टारगेट कर पाओगे, उतने ही एरर फ्री इसके आंसर्स आपके आएंगे. अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में मान लीजिए 2-4 क्वेश्चंस काफी टफ आ गए, वही आपका मोटिवेशन लेवल अगर डाउन हो जाता है तो you won't be able to focus and concentrate on upcoming questions, right? So वहां पे silly mistakes के chances बढ़ जाते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि which of the following is not true, और हमने अगर नॉट पढ़ा ही नहीं, उसे कंसिडर किया ही नहीं, तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, which of the following is true. और फर्स्ट ही ऑप्शन मोस्टली वो जनरली रखते हैं करेक्ट वाला, जो अपोजिट होता है, जो रॉन्ग होता है ना, वही रखते हैं, और हम इजीली उसको मार्क कर देते हैं, वी मूव फॉरवर्ड.
सो ये सारी मिस्टेक्स कभी एग्जाम प्रेशर में, टाइम प्रेशर में हो जाती हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए। और जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो भी जस्ट पॉकेट दोस, राइट, अच्छे से उसको टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन, पूरा एग्जाम ही टफ रहेगा, नो, बिल्कुल नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो स्लॉट वन में लॉजिकल रीजनिंग का पूरा की पूरा सेक्शन, अपना जो C2C का पूरा मटेरियल थे, जो लाइव सेशन, जो ऑनगोइंग सेशंस हो रहे थे, उसी उसी लेवल का आया था। सो वी आर ऑलवेज अप टू द मार्क, राइट। सो अगर वो भी चीजें अच्छे से फॉलो की होगी, सेशंस अच्छे से देखे होंगे, है ना, रिकॉर्डिंग्स भी हैं सबके, तो भी it will be more than sufficient to score pretty well in the snap. And we are hoping the similar pattern in the upcoming exam as well, so that students को maximum benefit हो. Okay, now I'm giving you the set of 3 questions on the screen. Okay, basis of one simple data. So you can take your time to solve this around 1 minute's time, right? And then we will have the discussion about it. Yes, come on, guys. The questions are very simple, right? Quickly post your answers in the comment box. Okay, there are 1 or 2 responses. Okay, let's see. So basically, there are Asha and Charu who are good in mathematics and athletes, है ना? So if we just read the question, we can understand they have given 2 parameters, एक तो name of the students and name of the subjects. So what we can do is we can follow the tick and cross method as well, है ना? एक साइड में हम लोग अगर नाम फिक्स कर देते हैं, लेट्स से आशा हो गया, चारू हो गया, है ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर। सो पहले तो बात कर सकते हैं हम मैथ्स की, करेक्ट, फिर बात कर सकते हैं एथलेटिक्स की, देन द फर्दर नेम्स आर लाइक दीपा, देन अच्छा मैं क्वेश्चन को ही फॉलो कर रही हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ। दीपा, आशा तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन, एथलेटिक्स हो गया, फिर स्टडीज हो गया, then we have Charu and Bina, so Bina's name will get added, then also general knowledge हो गया, maths हो गया, इस तरह के कुछ कुछ parameters we can add it up, जैसे ईला भी रहेगा फिर बाद में, we also have the arts with them, right? So just simply use the tick and cross method, इतना simple question लगेगा आपको, फटाफट solve हो सकता है, with that too with full of accuracy. Okay, so if we just think about the first point, Asha and Charu are good in mathematics and athletics, तो आशा मैथ्स में अच्छी है as well as athletics में भी अच्छी है,
इक्वली एप्लीकेबल टू चारू। अब इन्होंने क्या किया है, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आशा एंड चारू आर गुड ओनली इन मैथमेटिक्स एथलीट्स, ऐसा नहीं बोला है। सो वी कैन नॉट अज्यूम कि बाकी और किसी चीज में वो होंगे ही नहीं, तो सब जगह पे क्रॉस आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो जो जो क्वेश्चंस में डेटा दिया है वी विल फॉलो दैट, और जितना जितना बता रहे हैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। Then Deepa and Asha are good in athletics and studies. So Deepa is good in athletics studies. सेम इज विद आशा, आशा को एथलेटिक्स तो है ही, हमने मार्क किया ऑलरेडी, अब वो स्टडीज में भी गुड है एज पर द गिवन डेटा। देन वी हैव चारू एंड बीना आर गुड इन जनरल नॉलेज एंड मैथ्स। सो चारू इज, मैथ्स तो हमने टिक किया है, जनरल नॉलेज भी आ जाएगा। बीना को मैथ्स ले लो और जनरल नॉलेज ले लो। देन दीपा, बीना एंड ईला ओके आर गुड इन स्टडीज, ठीक है। So Deepa is good in studies, Beena bhi good in studies, and Ela as well. Also, general knowledge. Okay, I'm just completing the statement. General knowledge में Deepa चाहिए, Beena तो already ticked है, Ela भी चाहिए. And the last point says, Ela and Deepa are good in studies and arts. So Ela is good in studies, fine, as well as arts. और दूसरा है दीपा इज गुड इन स्टडीज एंड आर्ट्स, करेक्ट, दीपा स्टडीज एज वेल एज आर्ट्स, दैट्स इट, वेरी सिंपल है ना। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक बार ये डेटा बन गया तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाते हैं। हु इज गुड इन स्टडीज, जनरल नॉलेज एंड एथलेटिक्स, तो तीनों जगह टिक आना चाहिए, राइट। सो स्टडीज भी चाहिए, जनरल नॉलेज भी चाहिए और एथलेटिक्स भी चाहिए, मतलब आई गेस ये तीन है ना। सो द नेम ऑफ दैट पर्सन विल बी डेफिनेटली दीपा। नाउ इफ वी जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is good in studies, general knowledge and mathematics. So studies, general knowledge, mathematics, all three takes we have for Beena, right, for these three. And the last question of the given set is, who is good in studies, maths and athletics. Studies, maths as well as athletics. I believe ये तीनों मतलब की आशा. Yes. So now just to start with, I have kept very simple varieties, okay. But looking at the responses in the chat box, I can definitely understand कि सब लोग ये questions काफी अच्छे से handle कर पा रहे हैं और सबके answers भी मुझे मिल रहे हैं, that too with full of accuracy. So I'm really happy. And now I would like to move on to little next level with respect to the difficulty wise, okay. So just a second, I would be just sharing the question in front of you, right? Okay guys, कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस मैंने अभी बात किए हैं, स्किप किए हैं, सीधा नेक्स्ट एलओडी पे हम लोग जंप कर रहे हैं। सो एंड फॉर योर रेफरेंस, ओके, मैंने अभी ये कोडिंग का क्वेश्चन दिया है ना, अल्फाबेट सीरीज इज आल्सो देयर, ओनली फॉर योर रेफरेंस, टेबल इज आल्सो गिवन टू यू, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। 2 questions are on your screen. Try to attempt both the questions quickly.
Okay, fine. Sufficient time is given, I guess, है ना? So let's have a look at the first question. It says that BT, DR, and FP. So if we just refer to the first letter of each pair, जैसे B to D, it is going. Let's say एक को skip किया है, मतलब we can say if B is 2, D is 4. यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे अल्फाबेट्स को नंबरिंग दे दिया है ना, for easy understanding. जैसे A stands for 1, B stands for 2, C 3, D 4, like that. So if 2 से 4 बन रहा है, तो we would say plus 2. Yeah, we can say 1 got skipped. Then D to F, it is becoming again 4 is becoming 6, so again plus 2, है ना? So next भी आना चाहिए plus 2 के हिसाब से H. So जो भी option H के हिसाब से है, directly we can mark it, right? अगर दो ऑप्शन है, जैसे कि H O भी है और H N भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा लेटर कौन सा आएगा. तो the another letter is T R P, right? So this is T, this is R, this is P. So we can say it's going in the reverse order, right? 20 is becoming 18, matlab minus 2. 18 is becoming 16, that is again minus 2. Now the 16 will become 14 because the same pattern follow hoga series completion. So next has to be O. तो पहला था H और दूसरा है N. N मतलब option number 2. First is getting cancelled. Now if we just observe the next question, है ना? So we can understand यहाँ पे alphabets में भी कैपिटल लेटर, स्मॉलर लेटर, अपर केस, लोअर केस, इस तरह से उन्होंने ऑल्टरनेट नंबर्स यूज किए हैं, राइट? बट आई गेस द सीक्वेंस अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो के एल एम एन ओ, फिर पी इन्होंने स्किप किया, क्यू आर एस टी यू वी स्किप हुआ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी स्किप हुआ, सी डी ई एफ जी एच स्किप होगा, है ना? अब कैपिटल से स्मॉल होगा, मतलब एच अगर स्किप हो गया तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो डेफिनेटली नहीं आएंगे. अब यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ पे भी आए हैं, बट कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा, लेट्स ऑब्जर्व इट. इट्स कैपिटल, इट्स स्मॉल, इट्स कैपिटल लेटर, इट्स स्मॉल, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पेयर. ओके, so capital small, next has to be capital, guys. Okay, so we can definitely say that option number C will be the perfect match. समझ में आ रहा है? इस तरह के छोटे छोटे पॉइंटर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, जैसे 10th नंबर के क्वेश्चन को, है ना? लिटिल डिफरेंट वेराइटी एंड लिटिल लेंथी सीरीज एज वेल, राइट? बट यस, अगर केयरफुली रीड भी करोगे, कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इजीली आंसर्स आते जाएंगे. Okay, now the next question is also in front of you. Please give it a try to this.
Okay, if you are unable to see the question, just a second. Now, hope it's helpful to you. Okay, let's continue. So basically there are total 100 students, correct? So total अगर 100 है, 70 of them like maths and 65 likes English. So basically they are talking about two different subjects. This is for maths, this is for English. We have total 70. Only maths नहीं बोला ना, इसलिए only maths के circle में नहीं डाल रहे, पूरा total 70 goes for entire maths, including English भी हो सकता है. 65 is English. 10 students like none of the subjects. So ना English पसंद है ना maths पसंद है, ऐसे out of their sets 10 students आ जाएंगे. So पूछा है find the number of students who like both the subjects. So दोनों का intersection कितने students को पसंद है ना? So total we have 100. उसमें से 10 students ऐसे जिसे कुछ नहीं पसंद. तो basically 90 students रहेंगे जिन्हें either maths पसंद होगा या फिर इंग्लिश पसंद होगा या फिर मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों भी चीजें पसंद होगी. दिस टोटल हैज टू बी 90. ओके, सो ओके, अगर हम इनको वी जस्ट गिव सम नेम्स टू दिस. मान दीजिए इफ दिस इज ए बी एंड सी, so the addition of a plus b plus c has to be 90, out of which this a to c है ना जो कि 70 है for this entire circle. अगर a plus c is becoming 70 तो b का जो बैलेंस बचा है 90 कंप्लीट करने के लिए वो हमें पता चल जाएगा. तो b has to be 20, मतलब ओनली इंग्लिश लाइक करने वाले लोग 20 है. Now, if you observe this circle where c plus b is 65, right? c plus b अगर 65 है तो a कितना होगा, बिकॉज तीनों मिला के तो 90 होता है ना. उसमें से 65 में से ये 20 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 45. वैसे हमें a पूछा नहीं है कि ओनली मैथ्स कितना, बट बाई चांस अगर पूछा होता तो वी कुड हैव से टोटल 70 है उसमें से 45 हो गया तो यहाँ के लिए बैलेंस बचा है 25. Whatever they have asked for, they have asked for both the subjects. Both the subject goes for 45 members. Hope this was clear to you. Now let's move on to the next. Yes, guys, please give it a try to next.
Okay, let's start. So, of a members of a three athletes team in a school. So 21 are in the basketball team. So हमें पता है कि 3 टीम्स हैं, तो हमने 3 सेट डायग्राम हम लोग स्टडी करेंगे. One set stands for basketball, जहाँ पे टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं. 26 are there for hockey, है ना, 26, and 14 play. Sorry, 29 are there for football. So this is for 29. Okay. नाउ टोटल कितने हैं अभी तक पता नहीं है. ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ना हॉकी खेलते हैं, ना बास्केटबॉल खेलते हैं, ना ही फुटबॉल खेलते हैं, कुछ और गेम खेलेंगे या कुछ भी नहीं खेलेंगे. सो वो सारे लोग आ जाएंगे इन सेट्स के बाहर, दैट इज एन. बट दे आर अ पार्ट ऑफ द स्कूल, राइट. सो टोटल अपना यूनिवर्सल सेट में तो वो रहेंगे. नाउ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ओनली हॉकी एंड बास्केटबॉल नहीं मेंशन किया है. ओके, सो वी कैन नॉट अज्यूम कि वो लोग और कोई दूसरा सब गेम नहीं ही पढ़ेंगे. नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. तो हॉकी एंड बास्केटबॉल मतलब ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है, इसका वैल्यू होना चाहिए 14. ओके, नाउ 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल. सो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 15. सिमिलर लॉजिक से ये वाला पूरा पार्ट. ओके, यहाँ पे. एंड नाउ 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. सो दिस इज फॉर 12. आउट ऑफ विच 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स. वेरी नाइस. अगर इन दोनों का एडिशन 14 है, उसमें से यहाँ पे खुद ही आ रहे हैं 8, राइट. सो वी कैन इजीली से दैट अगर 8 यहाँ पे, तो बैलेंस 14 माइनस 8 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा. यहाँ पे 12 है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के 12 था, राइट. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए 7. दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट द डेटा. ओके, अब मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, इसलिए आई हैव मेंशन 14, 12, 15 वहां पे. बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप इतना सारा नहीं लिखोगे. ओके, once you read the question you can get the idea कि यहाँ पे 8 आने वाला है, तो यहाँ पे 14 में से आप सीधा बैलेंस लिखोगे 6. यहाँ पे 12 में से 8 गया, तो आ जाएगा आंसर आपका 4 और यहाँ पे 7. हाँ, वहां पे एक्स्ट्रा टाइम आप स्पेंड नहीं करोगे जस्ट फॉर द नोटिंग डाउन पर्पस. बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्या अप्रोच सॉल्व करना है. That's the reason I am just noting it down. Okay, the entire thing. Now, if we continue solving, तो बास्केटबॉल टोटल 21 है, उसमें से यहाँ 6, 8 और 4 हो चुका, मतलब 18 हो चुका. तो ओनली बास्केटबॉल के लिए 3 का बैलेंस है. मैंने क्या किया, इन तीनों का एडिशन माइनस 21. वैसे ओनली हॉकी ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. 8 प्लस 6, सॉरी 7 plus 8 is 15. 15 plus 6 is 21. 26 में से जाएगा तो बचेगा 5. एंड अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सो दिस इज 15 plus 4 is 19. तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल हमें 29 चाहिए थे. नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, राइट. सो टोटल मेंबर्स, तो बेसिकली इन सब का क्या हो जाएगा, एडिशन. अब आप बोलोगे 21 प्लस 26 प्लस 29 इन सब का एडिशन. नो, बिकॉज वहां पे जैसे ये 4 स्टूडेंट्स है, ये इस 21 का भी पार्ट है और इस 29 का भी पार्ट है, तो वो रिपीट कैलकुलेशन हो रहा है. ऐसे ही 7 एज वेल एज 6 हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है, हॉकी में भी है, बास्केटबॉल में भी है. ये 8 तो तीनों गेम्स में, तो वो ओवरलैप हो रहा है, तो काउंटिंग हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम 21, 26 एंड 29 को ऐड करते हैं. So it's always better to add up all these numbers, right? So अगर मैं बात कर रही हूँ इस पूरे सर्कल का, अपने आप में वैल्यू है 29, तो 29 तो वो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, यानी वो हो जाएगा प्लस 14. So my answer supposed to be 43. Okay? और एग्जाम में हो सकता है आपको एक और वन लाइनर दे कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज प्लेइंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 गेम्स. तो एन का वैल्यू यहाँ पे है 0. ओके, या
Okay, now please give it a try to this question. Yes, please read the question carefully. There is a little different way to deal with this question, even though काफी simple है. Two questions, guys. Total 2 minutes. You will be getting it. Yes, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से try to understand the questions और उसके बाद attempt the sub questions based on it. Okay, there are few students who are replying saying first का C आ रहा है और second का B आ रहा है, 15 और 10 बोल रहे हो. Some of you are saying 15 and 5. Okay. Some of you are saying 10 for both the answers. Okay. 15 and 10. Okay. So mix and match responses are there. Let's see. So total 85 children went to the amusement park where they could ride on merry-go-round, roller coaster round, as well as Ferris wheel. Okay. So total 85 members है ना, 3 rounds ले रहे हैं. मतलब 3 में से कोई भी एक ले सकता है, कोई 2 भी ले सकता है, कोई all 3 भी ले सकता है. Okay. So this is for merry-go, this is for roller coaster, and this is for Ferris wheel. Okay. It was known that 20 of them took all the 3 rides. ठीक है. So ये जो 85 members है, इनमें से हो सकता है कि किसी को exactly 1 ride चाहिए, किसी को exactly 2 rides चाहिए और किसी को all 3 rides चाहिए. तो इन सब का addition होना चाहिए हमारे पास 85 students. Correct?
ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई भी राइट नहीं लिया है, राइट। सो आगे देखते हैं। 55 of them, okay, so 20 of them took all three, so यहाँ पे होने वाले मेंबर्स है अपने पास 20. 15 of them took at least two of the three rights. At least two मतलब दो या दो से ज्यादा, more than two, okay. So two या two more than two, ये टोटल है हमारे पास 55. उसमें से यहाँ पे 20 हो चुका है, तो यहाँ के लिए रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 55 minus 20, that is 35, correct. Now each ride cost ₹1 and the total receipt of the amusement park is 145. So total 145 हो रहा है रिसिप्ट. तो ये तो सिर्फ इसका ही हो सकता है जिन्होंने एक राइड खेला है, दो राइड खेला है, या तो फिर ऑल थ्री राइड्स खेला है. जिसने 0 राइड लिया है उसके लिए रिसिप्ट जनरेट होता नहीं है. बट यस, ये 85 स्टूडेंट्स में 0 राइड खेलने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे. एम आई राइट? है ना? सो अब मुझे बताओ, जो 35 स्टूडेंट्स है इन्होंने दो राइड्स खेला है, तो उनके दो टिकट्स जनरेट होंगे, दो रिसिप्ट्स लगेंगे. सो वी हैव 35 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 70 टिकट्स यहाँ पे जनरेट हो गए. These 20 students are playing 3 games, 3 rounds. So 20 multiply by 3, तो यहाँ पे 60 टिकट्स जनरेट होना है. तो टोटल 70 प्लस 60 यानी 130 राउंड्स तो हो चुके हैं. तो टोटल वी हैव 145, राइट. आउट ऑफ विच 1 के लिए कितना बैलेंस बचेगा? दिस इज 70 प्लस 60 यानी 130 हो गया. तो 145 में से बैलेंस बचेगा 50. मतलब 15 रिसिप्ट्स, 15 टिकट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 राउंड खेल के वो जनरेट होना है. सो दिस इज 15. यहाँ पे एक ही राउंड खेल रहे हैं ना वो लोग. सो 15 टिकट्स मतलब 15 मेंबर्स, बिकॉज 1 पर्सन 1 टिकट. सो हमें यहाँ का भी वैल्यू पता चल गया, दैट इज 15. दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दिस 15. अब क्वेश्चन हम देखेंगे, तो दिस ऑल टुगेदर इज 85. उसमें से 15, 35 एंड 20 हैज गॉन. So 15 plus 35 is 50 plus 20 is 70. So 85 में से 70 गया तो बैलेंस बचेगा 15. ये क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं खेल रहे. इवन दो नन ऑफ द डेटा इज मेंशन और टॉकिंग अबाउट कि कुछ नहीं खेलने वाले लोग भी है या नहीं है, बट वो हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा. आफ्टर सॉल्विंग वी कैन अंडरस्टैंड दिस 15 स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग. ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक एग्जैक्टली 1 राइड? एग्जैक्टली 1 राइड मतलब 15, करेक्ट. या दिस 15 दे आर टॉकिंग अबाउट. यहां पे भी हो सकता है या तो फिर यहां से भी पता चलेगा. How many children did not play any of the ride? This is also again, fortunately हमारा आंसर मतलब नंबर सेम आ रहे हैं. So again, option number C is valid for both the questions. Few of you have already given me the correct answer. दोनों का आंसर किसी किसी का 15-15 था. For others, I hope this is helpful to you, है ना? Quite different variety है, little different agenda or approach to solve this, but hope you all have understood this. Let's quickly focus on the next question now. Yes, guys, please give it a try. This is based on the linear arrangement.
Okay. So of the 6 members of a panel sitting in a row, ठीक है, X is to the left of Q, ठीक है, so कहीं तो Q होगा, उसके लेफ्ट में X आ रहा है, बट नॉट ऑन द राइट ऑफ P, ठीक है, किसकी बात हो रही है? X की बात हो रही है. X is not बट ऑन द राइट ऑफ P, ठीक है. सो P के राइट में X है और Q के लेफ्ट में X है. Now the next is y is on the right of q, ठीक है, तो q के राइट में होना चाहिए y, but is on the left of z. किसकी बात हो रही है? अगेन दे आर रेफरिंग टू y is on the left of z, तो z का लेफ्ट इज y. z is to the left of r, तो r के तो यहां होगा, तब जाके उसका लेफ्ट हमें मिलेगा z. ओके, when nothing is mentioned, we will assume all of them are facing towards north. So जो अपना लेफ्ट है वही उनका लेफ्ट रहेगा, जो उनका राइट है वही अपना राइट रहेगा. So find the number of find the members who are at the extreme ends. So total 6 members चाहिए थे. 1 2 3 4 5 6, all 6 का अरेंजमेंट हो चुका है. मतलब इनके बीच में कोई बैठेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 6 ही members दिए थे. तो एंड पे हमारे पास है P एज वेल एज R, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मतलब while just reading we can have the answers for this. Yes, now quickly give it a try to this question. ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है. दिस इज बेस्ड ऑफ वी कैन से दी पजल्स, है ना. पजल से भी ज्यादा डेटा अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन है. एक ग्रुप क्वेश्चन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आप डील कर पाओ इस क्वेश्चन से तो बहुत बढ़िया होगा. मैं पहले ही बता देती हूँ, ये थोड़ा सा स्लाइटली अभी तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है, तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग एंड गिव योर बेस्ट.
Please give it a try quickly. Quickly post your answers in the comment box. Okay, fine. Let's try to discuss it. है ना? दिखने में क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है, बट इफ वी सॉल्व इट तो यू वुड अंडरस्टैंड क्या क्या शॉर्टकट्स, क्या क्या क्लूज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं टू गेट द आंसर क्विकली. ओके, so here they are talking about in an annual business conference conclave of ABC Institute, the class representative of 5 different departments, that is production, marketing, finance, system operations. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें दी हैं, एक तो स्पोर्ट्स का नाम दिया है और डिपार्टमेंट का नाम दिया है, तो हम लोग इजीली यहाँ पे टिक एंड क्रॉस यूज कर सकते हैं. Whenever there are only two parameters are given, we can easily use tick and cross, no issues at all. तो हम एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली चीजें फिक्स कर देते हैं. Suppose this is for production, this is for marketing, finance, system, and operations. Okay. Now the system and production has a class representative played football. ठीक है. If this is football, तो इन्होंने बोला है सिस्टम भी आएगा as well as production भी आएगा. But when the CR of finance joined them, okay, when the CR of finance joined them, the only common game among the three, the only common game among the marketing, system, and operation is hockey. So next is about hockey, right? The only common game in दोनों में कौन कौन सा है? मार्केटिंग, सिस्टम एंड ऑपरेशन, तीनों मिलके हॉकी खेलेंगे. सो मार्केटिंग, सिस्टम एज वेल एज ऑपरेशन. और ये लोग साथ में सिर्फ और सिर्फ हॉकी में हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते हैं. तो वी कैन से हॉकी इज अलाउड फॉर मार्केटिंग, सिस्टम एंड ऑपरेशन. 3 CR प्लेस टेनिस. ठीक है, टेनिस टोटल 3 लोग खेलेंगे. कौन से 3 लोग हैं अभी तक पता नहीं. The game played by most number of CRs was basketball. तो जहां कहीं भी बास्केटबॉल होगा, this has to be for maximum. 1 CR play all the 5 games. ठीक है, then another play 4, 3, 2 and 1. Okay.
मतलब कोई तो एक होगा जिसके सामने ऑल 5 टिक मार्क्स आएंगे, कोई एक है जिसपे 4 3 2 1 ओनली, यहाँ इस तरह से। अब हमें देखना है, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कम किया था लेंथ, तो शायद से यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग हुआ है। System and production class representative played football. Perfect. But when the CR of a finance joined them, the only common game among the three is. Okay. So let me just cross check it. Also, they are talking about यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 3 2 1 है ना। So अब मुझे बताइए टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? 3 मेंबर्स खेल रहे हैं, मतलब कोई तो 2 मेंबर्स है जो टेनिस नहीं खेल पा रहे हैं। So the common game between production and operation ये क्या है? Carrom. Perfect. This is Carrom. This is applicable for operations as well as production. Right? We will be definitely needing this data. मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको बैकएंड में डेटा देती हूँ. Meanwhile, you please carry on to this question. Yes, please give it a try to this question. Okay, so if we just look at the table, so we have to find out the missing character, है ना? So अगर हम let's say horizontally अगर बात करें, तो alphabets में यहाँ पे A B C, A B, this is also A B C, है ना? तो some other way A B C they are using, तो यहाँ पे C missing है, तो यहाँ C तो आना ही वाला है. Now if we just observe the numbers, 3 का इन्होंने क्या किया, स्क्वायर एंड क्यूब दे हैव यूज्ड फॉर 9 and 27. 4 का भी स्क्वायर 16 एंड क्यूब is 64. सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए उसका क्यूब विच इज 8. सो आंसर सपोज टू बी 8C.
Now let's try to solve this question. यहाँ पे they have just shuffle the alphabets, but code सबका क्या रहेगा, constant ही रहेगा, right? So it is like EARTH, है ना? Goes for 41590. मतलब मुझे पता चल रहा है E stands for 4, A stands for 1, 4 का 5 का है R, है ना? उन्होंने कोई अल्फाबेटिकल सीक्वेंस नहीं रखा, उन्होंने रैंडमली दे हैव यूज्ड द नंबर्स. वैसे PALE stands for 2, 1, 3 and 4. काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है. What is the code for Perl? So this is PEA R and L होने चाहिए. So P मतलब 2, E मतलब 4, A stands for 1. अगर इतने पे आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया. 2, 4, 1 मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन है जो मैच हो रहा है. चाहो तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो. R stands for 5 and L stands for 3. So 5 and 3. Now quickly give it a try to the question related to dice and visual reasoning. 3 views of a cube are given below, है ना? So which of the following will be the opposite to face number 4? आपको ये तीनों डायग्राम स्टडी करना है. उस बेसिस पे आपको क्या लगता है कि 4 का अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा? Okay, few of you have said 6 रहेगा या तो 2 रहेगा. Okay. So basically 4 का अपोजिट चाहिए ना. 4 का 3 एडजेसेंट है और 2 भी एडजेसेंट है. हमें 4 का अपोजिट मतलब यहाँ पे इसके पीछे जो रहेगा वो फाइंड आउट करना है. 3 और 2 तो आ ही नहीं सकते. ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो गए. एक तो 6 होगा या तो 5 और 6 होगा, है ना? अब इफ यू ऑब्जर्व 4 का एडजेसेंट 1 है और 1 का अपोजिट में 5 भी है और 6 भी है. सो इफ वी जस्ट रोटेट इट, ओके, अगर मतलब इसको 1 को अगर यहाँ लेके आते हो जो कि यहाँ पे है, तो ये 5 यहाँ पे नीचे जाएगा तो 5 यहाँ आ सकता है. या फिर अगर 1 को रोटेट करके ये मूव करते हो तो यहाँ पे नीचे 6 भी पॉसिबल है. तो इधर 5 आ सकता है या तो फिर 6 आ सकता है. ओके, ये चीज क्या होगी, ये इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रोटेशन एंड यू हैव टू विजुअलाइज इट. हर बार जाके एग्जाम में उसका डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. आपको बस उतना विजुअलाइज करके आंसर देते आना चाहिए, उतना फास्ट आंसर होगा. देखो इसका ट्रिक क्या है, जो एडजेसेंट है वो तो कभी नहीं होंगे उसके अपोजिट में, तो ये तो ऑप्शन से कैंसिल हो गए. अब 5, 6 में से ही हमें देखना है कि क्या क्या हो सकता है. तो एडजेसेंट का एडजेसेंट विल बी द अपोजिट ऑफ 4.
तो 1 के एडजेसेंट में हमारे पास 5 भी अवेलेबल है और 6 भी अवेलेबल है, तो दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते बिकॉज रोटेशन वाइज हमें पता नहीं कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा, तो 5 भी और 6 भी। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द क्लॉक, प्लीज गिव इट अ ट्राई टू दिस। Okay, so this clock related question talks about a watch is a minute slow, ठीक है। So मतलब स्लो है तो वी कैन रेफर कि -1 होगा मिनट, -1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूसडे, ठीक है। एंड 2 मिनट फास्ट, ठीक है, सो वी कैन से +2 मिनट्स, 2 मिनट्स फास्ट, ओके, at 1 PM on Thursday directly. Okay, so 1 PM देते हैं, that too on Thursday. तो पूछा है when did it show the correct time, है ना। So 1 PM Tuesday से लेके 1 PM Thursday तक टोटल 2 complete days हो जाते हैं। 1 day stands for 24 hours, तो 2 days stands for 48 hours। उसमें कितना वो क्लॉक ने गेन किया है, -1 से लेके +3, बेसिकली उन्होंने 3 मिनट्स कवर किया है। बिकॉज मान लीजिए अगर ये 1 PM होगा तो मतलब एक्चुअली इट वाज शोइंग 12:59, करेक्ट, और ये 1 PM इट इज शोइंग 1:02, 1:02, so the difference between both of these time is 3 minutes. So 48 hours में 3 minutes कवर होते हैं, तो टू शो द एक्यूरेट टाइम, करेक्ट टाइम, है ना, जो 1 मिनट पीछे था एक्चुअली उसे 1 ही मिनट गेन करना था, तो 1 मिनट के लिए कितना लगेगा, वी कैन इजीली से 3 मिनट का 1 मिनट हो रहा है मतलब 1/3 हो रहा है, सो 48 का भी 1/3 हो जाएगा 16 आवर्स। अब मतलब कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन डिविजन फास्ट होने चाहिए, ओके। और ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना नोट डाउन कर रही हूँ, आप अगर एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये नंबर्स फटाफट देख लो, -1 + 2 मतलब 3 मिनट्स का ट्रांजिशन है, और ट्यूसडे से लेके थर्सडे टोटल होते हैं 48 आवर्स, सो 48 आवर्स में 3 मिनट्स, तो 1 मिनट के लिए कितना, 16 आवर्स, है ना, 16 आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम। सो 1 PM से 12 आवर्स हो जाएंगे 1 o'clock AM, राइट, और +4 आवर्स लगेगा, सो दैट इज 5 o'clock इन द मॉर्निंग वेडनेसडे, नेक्स्ट डे, दैट इज 5 AM वेडनेसडे, ओके, 16 आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम। ओके गाइस, प्लीज गिव इट अ ट्राई। वैसे सीरीज के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैं पहले दूसरा वैरायटी देख लेती हूँ, अगर कोई और आप सॉल्व कर पाओ तो, या प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट।
दिस क्वेश्चन इज, मैं आपको क्लू दे देती हूँ, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द डिजिट सम. डिजिट सम का हो सकता है, अगर आप कुछ लॉजिक लगाओ तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. Okay. Okay, few of you are saying second option. ठीक है. अगर हम आंसर ऑप्शन नोटिस करें तो ऐसे कुछ पैटर्न तो है नहीं नंबर्स में कि कोई परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर्स है ना, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है. सो लास्ट में ऑप्शन बचता है अपने पास डिजिट सम का. सो दिस इज 9 plus 6, 15 plus 1 plus 1, that is 17. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 2 plus 6 is 8, 8 plus 9 is 17, plus 0 ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. Now if we notice, 1 plus 7 8, 8 plus 5 13, 13 plus 4 is 17. सारे इसके डिजिट सम 17 आ रहे हैं. बी का देख लेते हैं. 7 plus 3 10, 10 plus 2 is 12, plus 4 is 16. Only this one is not matching, so ये है हमारा odd one out. Okay, जरूरी नहीं हमेशा ऑड वन आउट के क्वेश्चन डिजिट सम पे ही बेसिस हो. कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी वो दे सकते हैं, स्क्वायर्स दे दिया, क्यूब दे दिया, है ना. सो अभी यहाँ पे डिजिट सम पे फोकस किया था. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन of the ranking and linear arrangement. Okay, please give it a try to this. Yes, there are few comments in the chat box. Yes, क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, है ना. लॉजिकल रीजनिंग पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, those questions we are covering now, right? और C2C के रेगुलर सेशन में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, सिमिलर वैरायटी, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के ही क्वेश्चंस इन द स्लॉट 1 ऑफ 2024 स्नैप we have observed. So don't worry, just have patience, have faith. जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो C2C का, it's good to prepare, है ना. So study well, focus on it. Okay, let's try to discuss this question. So in a row of students, Ramesh is 9th from the left. ठीक है. So अगर मैं लेफ्ट से काउंट करती हूँ, मान लीजिए रमेश अगर यहाँ है तो उसका नंबर हो जाएगा 9th लेफ्ट साइड से. एंड सुमन इज 6th फ्रॉम द राइट. तो अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं तो यहाँ पे सुमन है 6th पे. Okay. Now when they both interchange their position, तो अभी क्या हो जाएगा, रमेश की जगह सुमन आ जाएगी और सुमन की जगह आ जाएगा रमेश. Interchange their position, then Ramesh will be 15th from the left. Okay,
तो यहाँ पे जो रमेश पहुंचा है ये पर्सन यहाँ से 15th पे है. ओके, फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, सो पूछा है व्हाट विल बी द सुमन्स पोजीशन फ्रॉम द राइट. ओके, राइट साइड से सुमन का पोजीशन कितना होगा. ओके, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, है ना, पहले यहां से यहां तक 9th पे था और अब यहां पे पहुंचने के बाद वो 15th पे हो गया फ्रॉम द सेम डायरेक्शन. तो मतलब कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हुए वी कैन फाइंड आउट. 9 से लेके 15 तक, है ना, मतलब वी कैन से 6 स्टूडेंट्स गॉट एडेड. तो अब सुमन का पोजीशन यहां से तो 6 था ही और यहां तक पहुंच, यहाँ पे सुमन है ना, यहां तक पहुंचने के लिए और 6 ऐड हो जाएगा. तो दिस 6 + 6 बेसिकली 12. इस तरह से काफी इजीली आंसर मिलेगा. सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, देन ट्राई टू फिगर आउट द आंसर. पूरा क्वेश्चन एक साथ में पढ़ोगे और एक साथ में डील करोगे ना उसको, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट. सो वन बाय वन जो भी सेंटेंसेस दिए हैं उसको फॉलो करो. फॉलो करो मतलब उसका डायग्राम ड्रॉ करते जाओ तो आपके आंसर्स इजीली आते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ओके, प्लीज गिव इट अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन. अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हाइड हो रहा है तो ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द सेटिंग्स. There are two questions, guys. You will be getting 2 minutes to solve it. Okay. So here in the question that follows, there are given some statements and followed by the conclusions that can be drawn, right? So हमें बताना है कि कौन सा conclusion is most appropriate. So Joginder, Jaspal and Nirmal are 3 mountaineers. ठीक है, जहाँ पे जोगिंदर is the Jaspal's brother. ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ जोगिंदर ब्रदर, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मेल है तो हम लोग स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल है तो सर्कल से कर देते हैं. तो जोगिंदर इज द ब्रदर ऑफ जसपाल. जसपाल मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है क्योंकि जसपाल उसकी सिस्टर या ब्रदर में से कोई भी अभी तक पता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जसपाल इज निर्मल्स ब्रदर. तो जसपाल ब्रदर है मतलब वो भी मेल पर्सन, अभी पता चल गया. किसका ब्रदर है वो, निर्मल का. सो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड ये तीनों सिबलिंग्स हुए, है ना.
क्योंकि ये इसका भाई है, वो आगे और उसका भाई है, मतलब डेफिनेटली वो तीनों सिबलिंग्स हैं। निर्मल देखते हैं मेल है या फीमेल, लेट्स सी। निर्मल इज नॉट जोगिंदर्स ब्रदर। अच्छा, बट सिबलिंग तो है। अब अगर निर्मल ब्रदर नहीं है तो वो सिस्टर होगी, फीमेल, है ना। Therefore, Nirmal is Joginder's sister. Absolutely perfect. Definitely true. False तो ये है नहीं, can't से तो आएगा नहीं because we can determine it, है ना, तो ये भी आएगा नहीं. Probably false हो ही नहीं सकता. Definitely true है, वो काफी clear cut conclusion हमारा find out हो रहा है. This question was related to the blood diagram, blood relation. Okay. Now let's try to focus on the next question. People who are bald are generally of the intellectual type. Generally, उन्होंने possibility बताई. Okay. Anupam is bald. Therefore, Anupama is intellectual. Okay. This is the same person. ठीक है, ये typing error है. This is Anupam. Okay. अब यहाँ पे ही उन्होंने right जनरली यूज किया था, मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई थी. तो यहाँ पे श्योर शॉट तो बता नहीं सकते हम, है ना. इट इज जस्ट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, है ना. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो दैट मीन्स वी कैन से इट्स प्रोबेबली ट्रू, because the language of the given statement itself is indicating the possibility. Okay. Yeah. Yes, please give it a try to this question, guys. Again, the question belongs to numbers से related है, calculations वगैरह एक बार देख लीजिए. I believe you will be able to solve it. So if we just observe the numbers, okay, let's say opposite numbers हम देख ले. अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे missing term find out करना है. So if we just say 101 and 115, कितना होता है guys? Addition 116, right? What I'm saying is 101 plus 15 का addition ले लो. और अपोजिट नंबर्स जो बच गए, इन दोनों को देखते हैं. दिस इज 35 plus 43. So we can definitely say the digit sorry, the addition is 78. But यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? 38. Oh, so if we can just observe, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखोगे तो ये क्या होता है? 38, है ना. 116 minus 78 is 38. So similar approach we can keep it for this. 48 plus 184, है ना. और 34 plus 56, इन दोनों का एडिशन का हमें क्या चाहिए होगा? डिफरेंस. दिस विल बी नथिंग बट 232, and 34 and 56 will be nothing but 90. So according to me, answer supposed to be difference as 142.
जरूरी नहीं हमेशा ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स ही दे, है ना, कुछ कुछ डायग्राम्स काफी सिंपल डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाती है. यस. Now let's have the last question based on the syllogisms part. Let me just share it with you. वो जो पजल था जो दिया था, है ना, फुटबॉल हॉकी एंड ऑल, सो उसका एक डेटा थोड़ा मिस हुआ है बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रैक किया था, तो राइट, बट नो वरीज, इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर द डिफरेंट वेराइटीज. ओके, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो कि स्नैप में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में. सो होप this was helpful to you, and hope this had a kind of revision for you, है ना, for tomorrow's examination. Yes, let's quickly have a look at this question now. Okay, so statements क्या दिए हैं? All carrots are birds. ठीक है, this is all carrots ले लो, all birds ले लो. Some telephones are carrots. ठीक है, some telephones. ठीक है, तो telephones could be like this. All bed sheets are telephones. तो सारे के सारे bed sheet telephone हो सकते हैं. This was for bird and this is for bed sheet. So first conclusion could be like all bed sheets are birds. All bed sheet bird हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, we don't know, है ना. Some bed sheets are birds. Some bed sheet और bird, again पॉसिबिलिटी है भी या नहीं भी हमें पता नहीं है, श्योर नहीं है. कंक्लूजन्स कैसे होने चाहिए? डेफिनेट होने चाहिए, श्योर शॉर्ट होने चाहिए. नाउ सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स. हाँ, ये फॉर श्योर है क्योंकि देखो ये टेलीफोन और बर्ड्स में कॉमन पार्ट है. सम बर्ड्स आर डेफिनेटली टेलीफोन्स एंड ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स. ऑल टेलीफोन तो हमें पता नहीं, बट सम आर डेफिनेटली करेक्ट. मतलब ऑप्शन में से हम मार्क करेंगे ओनली 3 फॉलोज, राइट. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Quickly give it a try to this. हो सकता है ऑप्शंस के अलावा आपका आंसर कुछ और भी आए, तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. सो द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ऑल समोसास आर जलेबीज. ठीक है, then all jalebis are tikkis and all tikkis are barfis. ठीक है, अब इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स होते हैं. सो कंक्लूजन क्या पूछ रहा है? ऑल जलेबीज आर बर्फीज.
all jalebis are definitely barfis. Yes, perfect. All tikkis are samosas. No, guys, all tikkis are not samosas. अगर उल्टा दिया होता ना कि all samosas are tikkis तो चलता, या फिर some tikkis are samosas भी चलता, but not the all. All samosas are बर्फीज. हाँ, ये करेक्ट है. सारे के सारे समोसा डेफिनेटली बर्फी में अकोमोडेट हो ही रहे हैं. तो third is also correct. Now all burfis are jalebis. नहीं, all burfis नहीं है. Some burfis are jalebis है, but not all. So we have only 1 and 3 follows. Correct? That is option number 2. So this is how we can definitely solve the questions based on the syllogisms. And now I would just request you to stay tuned, right? And whatever answers, whatever preparation you had till this, just have faith in that. And yes, all the very best. Keep calm, है ना? Or whatever planning, whatever mindset or the strategy you must have decided and followed at the time of giving mock test, stick to that. It will surely give you the best output, right? And the entire material, the practice questions from C2Cs will be definitely sufficient to prepare and perform well in the exam. Okay, so खुद पे भी भरोसा रखो, मटेरियल कंटेंट जो भी आपको मिला है उस पे भी भरोसा रखो, so that you will be able to give your best in the examination. Okay, thank you, bye bye, take care, all the best. Over to you, Ketan sir. Thank you so much, Shika ma'am. Wonderful session. I saw it. Good work. I hope I'm audible. एक बार आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा. Am I audible? Am I audible? Hello, Ketan sir. Hi, Shika. Can you hear me? Damn. Hello. Yes, sir, you're audible, sir. All right, great. Thank you so much, Shika. It was a great session. I saw. I sat throughout the session. It was great. Good quality of questions, and I think students loved it. And perfect है. मुझे एक बारी होस्ट बना दो, शिखा. So I can make him the host. Yes, sir, yes, sir. Now you're host. Perfect है. And guys, जो बच्चों को नहीं पता है, I just want to introduce again Shikha ma'am. She's with us, and she will be helping you for all the non-CAT exams. She's got a great hold on Quant and LR, by the way. So those who are with us for SNAP, they have been trained by Shikha ma'am. And those who want to join for CMAT and let's say CET Maharashtra exams, Shikha ma'am will be there. And there will be other faculties also जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. So, Shika ma'am, thank you so very much. I will now take it ahead from here. Thank you. Yes, thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. All right. All right. Mr. Abhishek. the happy man of the hour. क्या बोलते हो? All set? Yes, sir. All set. All set. चला हैंडआउट वगैरह रेडी है आपली? Yes. परफेक्ट परफेक्ट. काय रे थकलास एकदम टायर्ड? नहीं एकदम फ्रेश. पार्टी का मन अभी कर तो रहा है होगा ना actually. तो फ्रेश. Cool है guys. All right guys, I want you all to welcome Abhishek sir. Abhishek sir is from Jamnalal Bajaj, by the way. He is a CET CMAT topper. एंड भाई अभिषेक सर का बहुत तगड़ा होल्ड है एलआर पे एंड क्वांट्स पे. बहुत सारे बच्चे पढ़े भी है अभिषेक सर से. जहाँ तक हमारा इसका भी सवाल है, स्नैप का भी सवाल है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं. सो गाइज जस्ट मेक श्योर करना कि जो भी सर बताएंगे इस सेशन में आप थोड़ा अच्छे से उसको फॉलो करो, नोट्स बनाओ, ध्यान से सुनो, है ना. सर शॉर्टकट ट्रिप्स एंड टिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं. अभिषेक सर विल बी कवरिंग क्वांट्स. ठीक है. सो अभिषेक सर ओवर टू यू. आप देखो एक बारी आप स्क्रीन अगर शेयर कर पा रहे हो, देन यू कैन गो अहेड विद Yes, sure, sir. Thank you so much for the introduction, and I'll be starting the screen sharing. Just let me know if the screen is visible. या
uh, okay. Uh, just give me a minute. अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मटेरियल पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे नहीं। अरे बाबा, तुम लोग बहुत बहुत जबरदस्त लोग हो। ठीक है, आराम आता अभिषेक, नॉट अ प्रॉब्लेम। या हाँ, झाली स्क्रीन शेयर झाली, ठीक है। परफेक्ट। विजिबल। अच्छा अभिषेक सर, हाँ ये अपना स्नैप वन जो था ना, हाँ हाँ वो डिफिकल्ट आया था, ठीक है। मतलब उसमें जो कॉन्ट्स के जो क्वेश्चंस थे, हाँ। जैसे एलओडी 1.5 तक बोल सकते हो, 1.25 1.5 तक आए थे, ठीक ओके, है। सो आई द एम फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्स कैसे डिफिकल्ट हो सकता है? नहीं, एक्चुअली ना, वो इनको थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ था, हाँ बट एग्जैक्टली। हाँ, बट मॉक्स में अपना जो कॉन्ट्स था, वो हाँ ठीक ठाक था, बिकॉज वो लास्ट ईयर का लेवल हमने मेंटेन करा था। गॉट इट। जो हमने अपने हैंडआउट्स जो कराए थे ना हमने, हाँ हाँ। वो हैंडआउट्स का लेवल के बाहर क्वांट्स गया नहीं, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट। तो आई एम शेअरिंग दिस हँडआउट विथ यू, ठीक आहे. ओके। स्नॅप डे वन, एकदा ते हँडआउट बघून घे, एंड यू कैन रेफर दैट हैंडआउट ऑल्सो, है ना. श्योर श्योर। वहां से क्वेश्चंस उठा के आप इनको बता सकते हो. तो थोड़ा सा एलओडी 1.5 तक लेना, ठीक है. डेफिनेटली। एंड बच्चा लोग डरना मत, अगर थोड़ा सा क्वांट्स डिफिकल्ट आएगा, मास्टर बैठा है, आपको बराबर से वो सब चीजें बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे. ऑल राइट, ओवर टू यू अभिषेक सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, so I hope my screen is visible, my voice is audible, I am visible. Okay, so first of all, I would like to give you some 10 minute. I would like to give you some gyan first of all about quants. Been hearing it from like last 2 3 couple of days that quants in Snap one was एकदम हल्ला गुल्ला मच रहा है कि quants difficult आ गया, quants difficult आ गया. So I think quants as a whole was not difficult. What was difficult is to select a right question. ठीक है. So as I always mention, your approach should be to select the right question rather in fact your approach should be to not select a wrong question than a right question. ठीक है. I hope you're getting it what I'm saying कि गलत क्वेश्चन मत चूज करो, गलत क्वेश्चन लीव करना छोड़ दो, ठीक है, लीव करना स्टार्ट कर दो. So these are like the speed breakers that I always talk about. जनरली कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एज द स्क्रीन इज विजिबल, सो आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस ना, देर आर गोइंग टू बी 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टीज. ठीक है, 1 2 and 3. So when I say or when we say the paper is easy, this LOD 1 question out of 20 questions will be somewhere around, I would say 14. ठीक है. LOD 2 questions will be somewhere around 3 and LOD 3 questions will be somewhere around 3. And this is when I call the paper to be the easy paper. Okay? And when I say the paper is medium, or as sir mentioned, the level of difficulty went from 1 to 1.5, let's say. In that case also, this level of difficulty 1 के जो questions है, वो ज्यादा नहीं गिरेंगे, वो बस 2 से गिरेंगे. And now there are going to be 12 LOD 1 question, 11 to 12 roughly. This LOD 3 questions, वो एक आध increase हो सकता है. So for example, 4. And LOD 3 question एक increase होगा, let's say 4. Can you see the difference between these two? LOD 1 still एक हाथ दूसरा कम हो गया, LOD 2 एक बढ़ गया, LOD 3 एक बढ़ गया. So this LOD 3 question जो है, वो anyways I'm not going to solve, or anyways I'm going to smart guess. जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, you are going to smart guess that particular question. So earlier I was doing it for 3 questions. Now I'll be doing it for 4 questions. ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़ गया बस. एंड मेरा जो काम बढ़ गया है वो बेसिकली यहां बढ़ा है. That is earlier it used to take like 1.5 minute for 3 question. Now it's taking 1.5 minute for 4 question. So एक क्वेश्चन से मेरा काम बढ़ गया है. ठीक है, तो मैंने पूरे पेपर को एकदम ऐसा बाइफर्केट करके आपको बता दिया है कि इवन इफ एलओडी थोड़ा बढ़ गया पेपर का, ठीक है, इजी से मीडियम हो गया है, काम एक्चुअली आपको यहाँ पे बढ़ा है. बिकॉज ये तो एनीवेज आपका होने वाला है एलओडी 1. ये तो एनीवेज यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, और मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर करके 30 सेकेंड्स में हो सकता है. एलओडी 2 क्वेश्चन आर समथिंग जहां पे आपको एक्चुअल काम करना पड़ेगा, एंड वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, एक आध क्वेश्चन बढ़ सकता है एलओडी 2 का. ठीक है, सो जस्ट टू
लेट यू नो कि इतना कुछ हल्ला गुल्ला नहीं, मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक कि पेपर बहुत ऐसा आउट ऑफ पैटर्न, मतलब कुछ अलग ही आया है, आउट ऑफ द बॉक्स एकदम डिफिकल्टी बढ़ गई है बहुत, ऐसे नहीं हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बढ़ा है, बट nothing to worry about it. And again, the very good thing is that, again, as I mentioned, if it is a difficult paper for you, it's going to be a difficult paper for everyone. ठीक है? तो like you should not worry about that as such. कट ऑफ गिरेगा अगर सच्ची में, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ विल फॉल डाउन, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है? So guys, with this was just a ज्ञान that I wanted to give you, just to cool down you guys कि इतना कुछ ऐसा मतलब ज्यादा हुआ नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक पीपल जस्ट आस्क मी कि सर यहाँ पे LOD 1 अभी इतना इंक्रीज हुआ है, तो स्नैप मॉक 2 में, मतलब स्नैप का अटेम्प्ट 2 में क्या होगा, कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होगा. तो दे माइट इंक्रीज इट, दे माइट डिक्रीज इट, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है? अपना एक अप्रोच बहुत क्लियर रहना चाहिए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को स्प्रेड करना सीखो. ठीक है? मॉक्स का यूज इसी के लिए होना चाहिए कि आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी गेज कर पाओ. अगर एक क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स रूल यूज करो, 10 सेकेंड 50 सेकेंड देखो, लग रहा है सॉल्व कर सकते हो, उधर ही सॉल्व करे खत्म करो. लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, मतलब कुछ भी करो सॉल्व नहीं होगा, स्मार्ट गेस करो. एंड लगता है कि बाद में सॉल्व होगा, स्किप करो. ठीक है? दिस इज द रूल दैट यू शुड अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस. So with that, now let's start. Let's start with some questions. I've deliberately picked 21, 22 because I heard that वहां पे भी LOD थोड़ा सा अच्छा खासा था. So let's see एक बार क्या है कैसा है, and I'll let you know some of the tips and tricks as well to solve the questions. कुछ कुछ questions तो ऐसे ही mentally solve हो जाएंगे, वहां पे पेन एंड पेपर यूज करने का जरूरत भी नहीं है. So yeah, with this, let's solve the first question. Again, we are not going to solve each and every question. मुझे जो क्वेश्चन लगते हैं कि जहां पे यू कैन यूज द ट्रिक, बिकॉज देखो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चन करना है, जो पूरा पेन एंड पेपर करके पूरा टेक्निक लगा के करना है, वो तो आप कर ही पाओगे, दैट इज नॉट एन इशू. ठीक है? वो तो कर ही पाओगे आप. इट्स जस्ट दैट कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगने वाला है, एंड आई लेट यू नो कैसे करने वाले. ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. अगेन आई गिव यू 30-40 odd seconds to solve the question, and once you're done you can put it down in the comment section of channel, but I don't have the access, so let's see. कोई दिक्कत नहीं है. चलो, give it a try. I will have my phone with me जहां पे मैं एक टाइमर लगाता हूँ. ठीक है? So immediately after 40 seconds I'll start explaining it. चलो, give it a try. Oh, I have the access of comments now. uh Hi Abhishek sir. Hi everyone. Hello everyone. हमारे लिए होता है सर आपके. ओके, कूल. आई थिंक हो गया अपना 1 मिनट, सो विल स्टॉप नाउ. ठीक है? लेट मी चेक योर कमेंट्स. कमेंट्स में तो आई कैन नॉट सी आंसर्स एज सच, बट ठीक है. एज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, आई डू वन थिंग, आई सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू. मेरा आई डोंट नो लाइव लैग हो रहा है क्या हो रहा है, बट 1 मिनट. हाँ, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सेटिंग. कूल. चलो, लेट्स स्टार्ट. सो AB is diameter, O is center. We need to find EDC. What is EDC? EDC is basically this. Okay. So now there are again 1 to 2 approaches that you can use. The best approach for this question should go something like this. यहाँ पे देखो guys, there is one. You can take it as a rule of thumb. Whenever diameter is mentioned and whenever a half circle is given, the first go-to move is to check the 90-degree angle. ठीक है? वो आपका first go-to move होना ही चाहिए. So take it as a rule of thumb if you want. That is, for example, in this case, AB is a diameter, and if, for example, look at this angle AEB. Can you see this angle? So any angle जो सरफेस पे लाइक सर्कमफरेंस पे फॉर्म हो रहा है,
एंड जिसका एक साइड ए बी दैट इज डायमीटर है, वहां पे द एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. टेक इट एज अ रूल ऑफ थंब इफ यू वांट. हमेशा ये वाले क्वेश्चन में यही रूल से स्टार्ट करना है. दिस इज योर गो टू मूव. ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्रीज. नाउ इफ दिस इज 90 डिग्रीज, द अपोजिट एंगल, द रिफ्लेक्स एंगल जो भी है, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बी ई डी इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. ठीक है, ये हो गया 90 डिग्रीज. अभी यू टेल मी, if I want to find this, if I know this, ठीक है, if I want to find this cross and if I know this, तो और कौन सा एंगल मुझे पता होना चाहिए? इट्स वेरी इजी. आई कैन कंसिडर ट्राइंगल बी ई डी. देखो बीईडी में से आई नो ई, आई विल हैव टू फाइंड डी and I'll have to find B so that I can get D because angle of all is equal to 180 degrees. So अभी the next task is to find this angle. कैसे find करेंगे? Have any idea? Okay, चलो. उसके लिए what we'll do is look at this and look at this. कुछ strike हो रहा है? The angle which will be formed at the center is going to be twice that of the one which is formed at the circumference, provided that the end points are same. ठीक है, तो E and C if they are same, so the angle which is getting formed at the center, which is 40 degrees, is going to be twice that of basically angle EBC. So angle EBC का मेजर कितना आएगा? Angle EBC is 20 degree. तो इसको ऐड कर दो. If you want to find it for triangle कौन सा BED, you know what is the measure of angle E? 90. You know the measure of angle B which is 20. D का पता नहीं है, एडिशन करो 180 निकालो. ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो. It's 180 minus 110. So 180 minus 110 is B. Option B is the correct answer. ठीक है. So I'll be telling you the level of difficulty as well after every question. So this is a level of difficulty 1 because there are only 2 rules. एंड दैट टू अगर आपको पता है गो टू मूव क्या है स्टार्ट करने का, तो अब तो ये क्वेश्चन बेयरली 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है एंड नॉट डिफिकल्ट. नाउ अगेन जस्ट थोड़ा सा ज्ञान. लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्री स्किप करूं क्या सर? तो माय स्ट्रेट आंसर इज, अगर ये क्वेश्चन आया एंड अगर आपको बेसिक रूल्स ही नहीं पता है क्या है ज्योमेट्री के, तो इतना इजी क्वेश्चन हो के भी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1. सो माय सजेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंप्लीटली किसी भी टॉपिक को लीव मत करो. वहां से जो इजी पार्ट्स पिकअप कर सकते हो वो पार्ट्स पिकअप करो. तो फॉर एग्जांपल अलजेब्रा छोड़ू कि नहीं, दैट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट इजी टॉपिक्स लाइक लॉगरिथम तो मत छोड़ो, बिकॉज लॉगरिथम पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही. एंड इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, तो बहुत इजी टॉपिक आप छोड़ दोगे. ठीक है. एंड स्नैप में ऐसा है कि देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड यू कैन से रफली 5 अगर टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज arithmetic, algebra, geometry, numbers and let's say PNC, 5 part. तो एंड अगेन 5 पार्ट में let's say सब पार्ट हर एक में 2-3 चैप्टर्स है. अरिथमेटिक में 8-9 चैप्टर्स है, अलजेब्रा में 6-7 चैप्टर्स है, ज्योमेट्री में 3-4 है, यू नो योर नंबर्स में 2-3 टॉपिक्स है एंड पीएनसी में 1-2 टॉपिक्स है. सबका मिलाओगे तो भी 20-25-30 टॉपिक्स हो जाएंगे. यू टेल मी 30 टॉपिक्स के ऊपर उन लोगों को 20 क्वेश्चंस पूछने हैं. सो कोई ना कोई टॉपिक छूटेगा. ठीक है. सो हर एक टॉपिक का अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी बेसिक कर लिया ना, तो भी, बिकॉज एनीवेज नॉन कैड एग्जाम इज ऑल अबाउट योर LOD 1 1.5 एट मैक्स, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ऑप्शन बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी चेक. या दिस इज अ गुड क्वेश्चन जहां पे वी कैन यूज द ट्रिक. प्लीज ट्राई क्वेश्चन 3 guys, क्वेश्चन नंबर 3. इन द मीन टाइम I'll just quickly check your comments. ठीक है. Give it a try. So can you please once repeat how angle EBC is 20 degree? EBC is 20 degree. देखो EBC में कैसा होगा ना कि okay guys, by the way others please mute me if you want. मैं just एक concept बताता हूँ. ठीक है. तो for example let's say this is a circle. And let's say these are 2 points, point A and point B. Okay. So नीचे scroll down करता हूँ. These are 2 points, let's say A, B, and if this is a center C, okay, this angle
and let's say an angle which is like this. Okay, this let's say point D. So the angle which is formed at the center, that is angle ACB, is always going to be twice that of angle ADB. Can you see this AB is common? The end points are common. It is just that one angle is getting formed at the center, another angle is formed at the circumference of the circle. So the one which is at the circumference is half of the one which is getting formed at the center. That's the only logic. Okay. All right, let's see. Answers are all right. And this is a very common and very typical question. At least 3-4 times तो क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा इन वेरियस नॉन कैड एग्जाम्स. स्नैप में खुद में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ होगा आई बिलीव. बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं. सो या प्लीज शुड वी स्टार्ट. Okay, let's see. So class A, B, C. Okay. हाँ ठीक है. Class A, B, C have the average score of 83, 76, and 85 respectively. The average of class A and B is given. The average of class B and C is given, and we need to find the combined average of A, B, C. Now one can do it in two ways. ठीक है. पहला वे क्या है कि अगर A and B का club average is 79, ठीक है, तो somehow if I can find the number of people in class A and if I can find the number of people in class B, कुछ भी एक rough number लगा के, and if I can take the average as 79, that is one way. Basically this is a way which I think is a trial and error basis first, and second where we are going to use the weighted average method. That is one thing, but that again will take a time. अगर इजीली दिख रहा है सामने सामने की यार दोनों का 79 आ रहा है तो दोनों का इन अ वे बिटवीन कहीं पे होना चाहिए, ऐसे सामने सामने दिख रहा है, यू कैन डू इट. अदरवाइज ये मेथड अवॉइड करो. सेकेंड इज बेसिकली द वन बाय यूजिंग विच वी विल बी डूइंग इट बाय यूजिंग द मिक्सचर एलिगेशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो. द एवरेज ऑफ 83 एंड 76 इज गिवन एज 79. ठीक है, सो यहां पे कितने आएंगे 4, यहां पे कितने आएंगे 3. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड, द एवरेज ऑफ 76 एंड 85 इज गिवन एज 81. ठीक है, आई विल डू इट सेपरेटली. इन फैक्ट द एवरेज ऑफ 76 एंड 85 is given as कितना 81. ठीक है, so this is your 5, this is your 4. So can you see this 4 is common. इसका मतलब there are going to be 3 students from this class A, 4 students from class B, again same 4 students from class B and 5 students from class C, so that the average match हो. Now that we have the average score of the class, we have the total number of students in the class, we can find the clubbed average, the combined average of class ABC. How to find the club average? Club average is basically we first need to find what is average, total upon number, or in this case for example it is total score upon number. So how to find the total score of class A? If we know that the average of class A is 83, we know for the fact that there are 3 students in class A. So how to find the total score is basically 83 multiplied by 3. So we can do it likewise. Okay, I'll do it upar thoda sa. So 83 multiplied by 3 first, plus 76 multiplied by, there are 4 students, right? So 76 multiplied by 4 plus this is 85 multiplied by 5. ये हो गया अपना total score divided by how many students are there in clubbed class A, B, C? 3 from A, 4 from B,
and 5 from C. So 5 plus 4 plus 3, whatever the number is going to be the total number of students. बस that's it. ये solve करना है, निकालना है. अभी इसको solve करने के लिए भी एक, if you want to use, you can use a trick. कैसे trick use करोगे देखो. The trick is called as unitary method. Everyone knows unit method से solve कर सकते हैं इसको. तो यूनिट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, चलो पहले तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, वेयर बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस. सो 83 3s are 249 plus 76 4s are, how will I do it? 75 4s are 300 plus उसमें ऐड करो 4, this is 304. 85 5s are कैसे करोगे? 85 are 400, 5 5s are 25, it's 425. Try to use such methods जो कि एटलीस्ट 2 to 3 सेकेंड भी सॉल्व करे, so that एंड में जाके will be ended up saving somewhere around 5-6 minutes, which will eventually help you to solve 2-3 more questions. So यहाँ आ गया 12. अभी बस ऐड करो न्यूमरेटर को and निकालो 9 and 4, 9 and 9, 18, 1, 4, 2, 6, 7, 3, 4, 7, 9 upon 12. So 8, 1, 1, 6, 5. 81.5. Option C is the correct answer. ठीक है, 81.5 option C is the correct answer. Now if someone wants to not do this, ये सब नहीं करना है मुझे, and मुझे just एक आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो. ठीक है, ये तो कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी कैसे सिंप्लीफाइड करके लेंगे. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे सेकेंड मेथड, I just need to focus on the unit digit. ठीक है, 83 multiplied by 3, what's the unit digit? 9. 76 multiplied by 4, what's the unit digit? 4. I'm just focusing on unit digit. 85 multiplied by 5, what is unit digit? 5. ठीक है, and I have to divide this by 12. ये तो पता होना चाहिए. What is 9 plus 4 plus 5? It is exactly going to be 18. ठीक है, so 18, that is basically 8 is my unit digit and I have to divide it by 5. ठीक है, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज करके भी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Perfect. So this is one way and this is another way where you can actually add them. Another way is basically by using the unit digit. क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा था सोनली बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. अदरवाइज अगर एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. So why can't we add 83 76 plus 85 by 3? एक सेकेंड, 83 76 85 by 3. हाँ, नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलो इसको मैं रब करता हूँ. ठीक है, एंड एक जस्ट ऐसे ही डाउट आया है किसी को. सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग मी डाउट्स. बहुत अच्छा डाउट है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत आता था ये डाउट कि सर मैं डायरेक्टली 83 76 एंड 85 को ही क्यों नहीं ऐड करूं. देखो बताता हूं. See, I have the average score of 3 class ABC. I know that there are 3 classes, so just adding all of them 83 76 85, divide them by 3. इससे wrong क्या होगा देखो, इससे ये होगा if you are considering, that means you are considering there is one person in every class, and if you are assuming so, देखो 83 and 76 का एवरेज 83 plus 76 divided by 2, ये 79 आएगा क्या? एक बार चेक करके बताओ मुझे. If it is 79, then I'll definitely go with this. But if it is not 79, that means this is not a normal average. This is the concept of weighted average. There's a difference between normal average and weighted average. ठीक है, and that's why I use this. अगर यहाँ पे 83 and 76 का डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे एवरेज यहाँ पे दे दिया होता एंड 76 एंड 85 का यहाँ पे दे दिया होता तो डायरेक्टली आई वुड हैव से कि ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, निकाल दो. बिकॉज एनीवेज इन दैट केस द रेशियो विल बी ऑफ 1:1:1. इन दिस केस इट इज 3:4:5 इफ यू कैन चेक, एंड दैट्स व्हाई वेटेड एवरेज कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है, LOD 2 थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी नॉच अबव था बट डेफिनेटली डूएबल क्वेश्चन. आई वुड से समवेयर अराउंड 1 minute is sufficient to solve this question if you know the basics of weighted average and mixture alligation. ठीक है, next. Oh, the next question from logarithm, my favorite, so please give it a try, and after which you'll get to know ki why I'm saying ki don't miss out on logs.
एक बार सॉल्व करो क्वेश्चन 4. I'll give you 30-40 seconds. Give it a try. In the meantime, मैं कुछ कमेंट्स चेक करता हूँ. लेखक, I hope it's clear to you. Exactly. We don't know the number of students in each class, and that's why we'll have to take into consideration the weighted average. ठीक है. लॉग क्वेश्चन स्किप. अरे नहीं. सबसे बड़ा मिस्टेक लॉग क्वेश्चन देख के स्किप करना. अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है. One of the easiest question of the slot, one of the easiest question of this, is this whole set of questions. Okay, great. I started receiving the answers, and I think all of them are correct. So 10 more seconds, guys, not more than that. In fact, यहाँ पे तो कुछ ऐसा there is no quadratic equation also, so it's very easy. It's just that you should know only one log ka rule, which is log A plus log B is equals to log AB. So 5.5 No, it's not 5.5. It could be 5.5, but let me check एक बार. ठीक है. So log A plus log B is log AB. That's the only rule you are going to apply over here. And of course, if log A is equals to log B, with the same base, that's very important. With the same base has to be same. So I can directly cancel log. Okay, another rule that you can use. So log 3 to the base 10 plus log 4x plus 1 to the base 10 is equals to log x plus 1 to the base 10. So log A plus log B is log AB. So I can write it as log to the base 10, 3 multiplied by 4x plus 1. This is first thing, equals log x plus 1 to the base 10. First of all, I'll solve this. So this is log 10, log to the base 10, and in bracket it will be 12x plus 3 equals log to the base 10 x plus 1. Okay. Now both the sides log is there, and that too with the same base. Hence I can directly eliminate this log sign, and now I have 12 plus 3 equals to x plus 1. It is just that it's all about solving the equation. 12 plus 3 equals x plus 1. So 12 on the left hand side, x on the left hand side, and I think कुछ गलती हुआ क्या? 11x equals -2, and x equals -2 upon 11. This type of answer has to be there. And as you know, I don't have this option. It has to be none of this. Let me quickly recheck it. कुछ calculation mistake तो नहीं ना? 3 4 12, 3 बराबर है x plus 1 बराबर है log will get cancel. हाँ, it has to be -2 by 11. None of this has to be the correct answer. One of the easiest question, I would say definitely a LOD 0 question. Okay? You guys know ना अपन LOD 0 कब देते हैं? It's basically for the question which can be solved mentally, orally, without using pen and paper. This is that type of question. Now can you get it कि why I was saying कि एक भी क्वेश्चन लीव मत करो. Like कोई भी टॉपिक एज सच लीव मत करो. अगर बेसिक्स पता होंगे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन. ठीक है. So can we take log of 4x plus 1 as log 4 log x? No. You cannot take. नहीं. ऐसे कैसे करोगे? नहीं होगा ना. Log of 4x plus 1 को you are saying कुछ अलग ही बता रहे हो. 4 log क्या लिखा है? 4 log कहाँ पे गया वो? अच्छा, डिलीट हो गया. चलो, जो भी था ये नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे टू द इसका रेज टू पावर 4 होगा, देन यू कैन टेक इट एज दिस 4 log 4x plus 1. This is something that you can take. ठीक है. I hope it is clear.
Can you explain how to calculate the last two digits of the sum? Oh, good question. We will take this question at the end. I don't know how to pronounce your name, but it's a very good question. We'll definitely take it at the end. अच्छा question है वो, ठीक है? चलो, next question. Oh, next question is from DI. So I will try to zoom it out. Okay, great. Give it a try. A question followed by only question. So please try to find this, try to find the answer and let me know the answers in the comment box. I'll check the comments in the meantime. Sir, I can't hear your voice. Okay. Can someone quickly respond in the chat box if my voice is clear? I think there is lag मेरे stream में and मेरे live में. So एक बार quickly बता दो if the voice is audible. I think it has to be audible. Clear है ना? चलो, cool. Got it, guys. Thank you so much. Okay, next question. It's clear. Okay, all right. Got it. Thank you so much. Hello, I received some questions from Snap day one as well. So I'll try my best to cover that as well. ठीक है, कुछ questions अपन cover करेंगे. I basically wanted to tell you कि ऐसा कुछ level of difficulty ज्यादा बड़ा नहीं है. It's just that एक आध दूसरा question difficulty आया होगा, difficulty level वाला. Maybe that might cause you some troubles. तो ठीक है. Very easy, a number of different 4-letter words that can be made using letter of words such as 3 letters are repeated. Easy. Find the sum of the numbers divisible by 3 or 7. ठीक है. 5% stock, 15% premium. What's the yearly income? Cool. चलो, ये क्वेश्चन देखते एक बार. ठीक है. The question is solely based out of calculation. कैलकुलेशन ही करना है. ठीक है. अभी मैं बस ये बताता हूं before we start the question. Just by looking at the options, अगर ये क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा होता स्नैप में तो मैं ये क्वेश्चन को छोड़ देता. नॉट दैट मैं ये क्वेश्चन का तुक्का मार के आगे निकल जाता. आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन एंड देन आई वुड हैव सॉल्व्ड इट. ठीक है. सोनली बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज average annual exports during the given period for company Y is approximately what percent of the average annual exports of company Z. So क्या करना पड़ेगा? इजी है, क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं है. कंपनी Y which is your triangle, इसको सबको ऐड करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7. Then कंपनी Z which is I think a square को ऐड करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7. दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब ये ऐड करने में समझ लो आपके अराउंड 20 सेकेंड्स गए. एक का ऐड करने में 15 सेकेंड, दूसरे का ऐड करने में 15 सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड्स गया. ये कोई तो एक आंसर आया आपका एंड आई एम श्योर कि वो आंसर नॉर्मल कोई नंबर नहीं होगा. कोई तो ऐसा लाइक अच्छा खासा टफ नंबर हो सकता है. ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे. एंड फिर देन आई हैव टू फाइंड कि कंपनी वाई कितना परसेंट ज्यादा है एनुअल इनकम देन कंपनी जेड. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉट एवर द वाई का एवरेज इज वाई माइनस जेड अपॉन, किसे ज्यादा पूछा है ना, सो अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा एंड देन आंसर निकालना पड़ेगा. यहाँ पे भी अगर आंसर्स ऐसे होते समथिंग लाइक 70 80 90 एंड लेट्स से 95 या फिर लेट्स से 60, तो भी आई वुड हैव से कि ये क्वेश्चन इजी है. बट यहाँ पे लुक एट द ऑप्शंस में डेसिमल तक आंसर गया है.
तो डेफिनेटली नॉट अ क्वेश्चन दैट आई शुड पिक एट द स्टार्ट. ठीक है, विल कवर दिस क्वेश्चन एट द एंड. अपन आते हैं ये क्वेश्चन पे बाद में. इट इज जस्ट दैट ये क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टिल 2 है, नॉट लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 क्वेश्चन, बट नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी डूइंग इन द फ्लो. ये क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन है. एंड ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके मतलब मिस्टेक्स हो. सो डेफिनेटली नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इजी थे. ये क्वेश्चन आ गया स्पीड ब्रेकर आपका. बीच में आएंगे ही ऐसे स्पीड ब्रेकर्स, यहाँ पे आपको छोड़ देना ये क्वेश्चन. नॉट लाइक कि ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, बाद में जाके फिर से एक क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग द क्वेश्चन बिकॉज मेथड तो मैंने बता दिया आपको. डिफिकल्ट नहीं है बट डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है फॉर श्योर. नेक्स्ट वन. ओ अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन 6, प्लीज गिव इट अ ट्राई. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Sir, one more unrelated doubt. If we have to find a number that leaves different remainders when divided by numbers, like find a remainder leaving to the 3. हाँ, अगर ये क्वेश्चन होगा तो मुझे बताना. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. इसके लिए एक ट्रिक है. आई टेल यू द ट्रिक एज वेल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इफ यू हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन डू लेट मी नो. हाँ, एग्जैक्टली सुमित. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज सोनली मेड टू वेस्ट योर टाइम. टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था वो. स्पेशली अगर आप ऑप्शंस देखोगे, कितने क्लोज ऑप्शंस है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को टाइम दो, बाद में जाके सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस. चलो ये क्वेश्चन बताओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. एंड दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन जो कि इजी भी है फॉर समवन हु नो हाउ टू सॉल्व इट, एंड डिफिकल्ट है जिसको पता ही नहीं है, उसको तो सॉल्व करने में 4-5 मिनट लग जाएगा ये क्वेश्चन. ही माइट यूज द फॉर्मूलाज एंड वो सब करके करेगा, बट नो नीड. इसका आई टेल यू ट्रिक एज वेल. एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ मैं. आई थिंक 20 more seconds guys, not more than that. ओके, ऑप्शंस आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. ग्रेट. चलो एक काम करते हैं. ये क्वेश्चन को ना पहले थोड़ा सा इजी ब्रेकअप करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं पहले. ठीक है, देखो. फर्स्ट थिंग इज 10 raised to 99. ओ बाय द वे, बिफोर दैट, एक नंबर है. लेट्स से नंबर इज 27. ठीक है, 27 को अगर मैंने ऐसा स्प्लिट किया, आई बेसिकली नीड टू चेक वेदर 27 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. ठीक है, तो इजी मेथड है. आई नो 7, मतलब 27 को 7 + 2 करोगे 9 आएगा. डिविजिबिलिटी ऑफ 9 करके अप्लाई कर सकते हो, बट जस्ट वांटेड टू टेल यू अ थियरी. सो अगर 27 को मैं 18 + 9 स्प्लिट करूंगा, इफ 18 इज डिविजिबल बाय 9, इफ 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो कैन आई से 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. बराबर है. सिमिलरली, इफ 10 raised to 99 - 1 ये डिविजिबल बाय 9 है, 10 + 10 raised to 17 + x ये डिविजिबल बाय 9 है, देन द एंटायर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. एंड सेम चीज बोला है कि दिस एडिशन इज एंटायरली डिविजिबल बाय 9. दैट मीन्स, अभी देखो, ये हो गया फर्स्ट चीज. अभी सेकेंड, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन यू टेल मी 10 raised to anything, 10 raised to anything, लेट्स से 10 raised to 3. इजी करने के लिए 10 raised to 3. 10 raised to 3 का आंसर क्या आएगा? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 0 0. और 10 raised to x जो होगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 10 0 0 0 0 0 0. इसमें से यू टेल मी इफ आई सब्ट्रैक्ट 1. ठीक है, 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 999 आएगा. या फिर कुछ भी नंबर होगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, द आंसर दैट यू विल गेट इज गोइंग टू बी 999999 so on and so forth, only consisting of 9. Now you tell me, out of these two parts, let's say A and B, ठीक है, A and B, there are two parts. A का आंसर हमेशा 99999 के टर्म्स में आएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज एनीवेज इट्स 999, तो डिविजिबल बाय 9 तो होगा ही. डिविजिबल, इट्स एंटायर लाइक परफेक्टली डिविजिबल. तो ये तो होगा. अभी देखो, A + B इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9. उसमें से A इज डिविजिबल बाय 9, तो B हैज टू बी डिविजिबल बाय 9. B को 9 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मेरा टास्क क्या है? बेसिकली ये चेक करना कि हाउ कैन आई मेक इट डिविजिबल बाय 9, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, ये पूरे नंबर को. ठीक है, तो अगेन सेम एग्जांपल, लेट्स से इट्स 10 raised to 3.
ठीक है, लेट्स से इट्स 10 रेज टू 3. 10 रेज टू 3 इज 1000. नाउ 10 रेज टू 3 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर सकता हूं फ्रॉम दिस ऑप्शंस 1, 8, 11, 16 सो दैट ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, सो 10 रेज टू 3 इज 1000. ठीक है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 से डिविजिबल होगा, बट कितना ऐड करूंगा तो 9 से डिविजिबल होगा. वी कैन ऐड, देखो चलो 1 ऐड करते हैं, 1001 नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है, 8 ऐड करेंगे 1008. हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9? एडिशन एंड चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. दैट्स अ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9. यस, ये हो रहा है. इसमें 11 ऐड करोगे तो 1011, द एडिशन इज 3, नॉट डिविजिबल बाय 9. एंड 1006, द एडिशन इज 7, नॉट डिविजिबल बाय 9. सो 8 ऐड करोगे तो ये हो रहा है. दैट मीन्स कोई भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, 10 to 17 है, मतलब 10 के बाद 17 जीरो है, वॉट एवर, द नंबर इज 1 प्लस 00000. इसमें अगर आप 8 ऐड करोगे तो द एडिशन ऑफ टोटल नंबर विल बी 9 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 9. सो इन दैट वे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है इफ यू डू इट लॉजिकली. अगर फॉर्मूला यूज करने बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, समझ लो, फिर 3-4 मिनट लग जाएंगे. अदरवाइज देन अगर आप मतलब नहीं करना चाहते तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 बोल के छोड़ दोगे ये क्वेश्चन को, बट इट्स एक्चुअली अ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. चलो एक क्वेश्चन कर देगा बिफोर दिस. ठीक है, वन क्वेश्चन विच अपियर्ड इन स्नैप लास्ट आपका जो अटेम्प्ट था उसमें आया था एक क्वेश्चन. आई राइट दिस क्वेश्चन. ठीक है, कि पर्सन इन्वेस्ट, पहले ये करते हैं देन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 7. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करना चाहिए. सो पर्सन इन्वेस्ट ₹34500 at 5% in stock and 15% premium. ठीक है, so question is what is the yearly income? ठीक है, of course this is yearly saving. ठीक है, एंड आपको निकालना है yearly income. ठीक है, सो एक बार देखो ये क्वेश्चन. पर्सन का इन्वेस्टमेंट है ₹34,500. इसमें से 5% स्टॉक में है एंड 15% प्रीमियम में है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द ईयरली इनकम. क्या करोगे? ठीक है, आई एम नॉट गोना सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, आई जस्ट टेल यू. अगर पर्सन का इन्वेस्टमेंट दिया है 34,500 एंड उसमें से 5% स्टॉक एंड 15% प्रीमियम दिया है. ठीक है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 20%, बिकॉज दैट्स द क्वेश्चन. आई कैन सी, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ तो यहाँ वहां, नॉट श्योर एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो आगे पीछे हो सकता है, बट आई कैन गेट फ्रॉम द क्वेश्चन इज दिस इज 15%, लाइक 5% एंड 15% इज द इन्वेस्टमेंट. 5% एंड 15% इज द इन्वेस्टमेंट. एंड ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 34,500. सो इफ दिस 20% काउंट्स टू 34,500, दैट मीन्स आउट ऑफ 100% 20% का इन्वेस्टमेंट है. तो you just straight away have to multiply this with 5 in order to get the yearly income. ठीक है, that was the whole gist of the question. तो मे बी वो प्रीमियम एंड स्टॉक ऐसे करके थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी. आई बेसिकली ट्राई टू कवर सच क्वेश्चंस इन बिटवीन, बीच बीच में मैं ट्राई करूंगा. अभी फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 7. इन द मीन टाइम आई विल चेक कि आगे कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं. क्वेश्चन 7, प्लीज गिव इट अ ट्राई.
सर हे सगळं तिथं नाही सुचत. ओके. नहीं, ये सब होगा, वहां पे भी जाके ये सब होगा. द ओनली थिंग इज you'll हैव टू मेंटेन योर काम. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर. ये सब चीजें अगेन मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लग सकता है, बट थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके जाओ. ठीक है, 10-15 मिनट्स आराम से एकदम दिमाग शांत रख के सॉल्व करो. एनीवेज 1 घंटे का पेपर है. ठीक है, तो वो 1 घंटा बस आपको बहुत कामली लेना है. एंड मतलब आई नो इट्स वेरी इजी टू से, बट try your best to be very calm on the D-Day. अच्छा, you guys want to zoom in the handout क्या? मैं zoom करता हूँ मेरे साइड से. Give me a minute. हाँ, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज टू फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज? टोटल एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो कैसे करोगे? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, what is speed? Speed is distance upon time, right? So average speed is total distance अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अभी देखो 50% ऑफ द जर्नी 25 kmph से किया है, 40% ऑफ द जर्नी 20 kmph से किया है, एंड रेस्ट 10% ऑफ द जर्नी 10 kmph से किया है. सो फॉर ईज आई एम अज्यूमिंग, लेट्स से दिस इज द 100 किलोमीटर जर्नी. ठीक है, लेट्स से दिस इज द 100 किलोमीटर जर्नी, दिस टोटल डिस्टेंस इज 100 kilometers. The easy way or the shortcut way to do this is basically to split this 100 kilometers in different parts. So for example, 50%, first 50%, that is, let's say यहाँ से यहाँ तक 50 kilometers. ठीक है, next 40%, that is, let's say from this to this is next 40 kilometers. And then the last mile, which is 10 kilometers. Okay, you tell me, what is the speed of this 50 kilometers? Is 25 kmph. What is the speed of this 40 speed over this 40 kilometers range is 20 kmph. And for this last 10 kilometers is 10 kmph. Now it's even more easy. Okay, we know the total distance. Total distance is 100 kilometers. Do we know the total time? No, we don't know the total time as such, but definitely I can find the total time. Okay, देखो, for this first sprint, which is A, ठीक है, A के लिए where should I write this? ऊपर लिखता हूं मैं. ठीक है, time, speed is equal to distance upon time. Time is equal to distance upon speed. If you want to find the time taken in this A sprint, for this A sprint, this is basically distance upon your average. What is total distance? 50. What is average? 25. What is time taken? 2 hours. So for this A, who is this guy? Journey है तो ठीक है, someone has taken 2 hours. For this second, again same distance 40, time 20, answer is 2 hours. So second के लिए भी 2 hours लग गया. And for third, it is total 10 divided by 10, 1 hour. तो यहाँ पे लग गया 1 hour. ठीक है, अगेन ये समझा रहा हूं मैं आपको तो थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम लगता है, but if you do it, it's very easy. It's just that mentally you can do it. Time is equal to distance upon speed. 50 upon 25 is 2, 40 upon 20 is 2, 10 upon 10 is 1. Total time is 5, total distance is 100. Average is total distance upon total time, 100 upon 5. 100 upon 5, exactly. 20 has to be the correct answer. A level of difficulty 0 question according to me, because you can do it even mentally. Total distance is 100, total time is 5, answer is 20. This is just to explain you. ये कुछ करना नहीं है, माइंड में आप मैप कर सकते हो. 50% of the journey, because anyways if you are assuming a number, 100 is a very good number to assume. ठीक है, so 50% is 50, 40% is 40, rest is 10. 50 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो जाने के लिए 2 hours लगेगा. 40 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 2 hour लगेगा. एंड रिमेनिंग 10 hours से जा रहा है तो 1 घंटा लगेगा. टोटल डिस्टेंस वी हैव अज्यूम 100, टोटल टाइम वी हैव अज्यूम, लाइक वी हैव कैलकुलेटेड 2 + 2 + 1 5, एवरेज आंसर आ गया 20. सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
I hope the question is easy and clear to you. Okay, let me go back to the YouTube comments. Cool. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा डाउट है कि सर ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं? बिकॉज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. एलओडी 0. नेक्स्ट. Oh, a question from PNC. I heard that there were a lot of questions from PNC this time. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. In the meantime, I'll check if I can cover another question. कोई अच्छा वाला. क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं बट ठीक है. Okay. 6% for the first year and every year increase by 7. Oh, okay, great. So 45, 90, 270, 7%, 8% and 9%. Approximate. ठीक है, cool. We can take this question. This is from compound interest. All right. After this question, I'll take one question from compound interest जो कि अभी आया था. And the amount at the end of 4 years. Cool. Hmm. Okay. All right. Chalo, let's see. Question is, how many numbers bigger than 2000, smaller than 7000 can be made using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9? The digits cannot be repeated. So it's a question without repetition. बहुत easy question है. Solve कैसे करेंगे? देखो. We'll use the traditional approach जो अपन लोग use करते हैं. Normal trick है, ज़्यादा कुछ as such कुछ इसमें करने का जरूरत नहीं है. We'll have to form a 4-digit number. ये तो हमें पता है. 4-digit number form करना है. So let's first form the 4-digit number. ठीक है. अभी देखो 4-digit नंबर फॉर्म करना है. ठीक है. इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 7000. ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 7000. ओके. सो फर्स्ट विल अज्यूम दैट दिस नंबर इज कांस्टेंट. ठीक है. ये जो थाउजेंड्स प्लेस का नंबर है 2, इसको विल कीप इट कांस्टेंट. नाउ if 2 is constant, in how many ways can I fill hundreds place? 2 is already gone, so it cannot be there as it is without repetition. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ways to fill this. 7 ways. So next we have 6 ways, and finally we have 5 ways to fill the unit place as the repetition is not allowed. So if 2 is there at the I would say at the thousands place, there are total 7 into 6 into 5. कितना आएगा ये? 7 6 जा 42, 42 5 जा 210. There are 210 ways of doing this. ठीक है. Now similarly, ठीक है, we will do it for number greater than 2, which is 4, 5, 6. Because 6 के ऊपर अगर मैंने 7 ले लिया तो 7000 से नीचे वाले नंबर चाहिए मुझे. So basically I'll have to consider it till 2, 4, 5, 6. So if I consider 4 over here as a first place, again I'll have to do it in the similar way, 7 way, 6 way, 5 way. Similarly अगर यहाँ पे 5 होगा first number, तो again I'll have to do it in the same way. And similarly finally I think कौन सा number है? 6. 6, 1, 2, 3 and then again I'll have to do it in the same way. So 210 ways, 210 ways, 210 and finally again 210. It's basically addition of 210 4 times. 210 multiplied by 4, 840 is the correct answer.
अगेन पीपल आस्क मी सर पीएनसी लीव करना चाहिए क्या? अगर लीव करोगे पीएनसी तो इतना इजी क्वेश्चन भी you lose out on such questions. This time as I heard there were like lot of questions, 3-4 questions, 4-5 questions from PNC. उसमें से हम डैम श्योर कि 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही इजी होंगे, चिंदी क्वेश्चन होंगे. ये क्वेश्चन although I would not say कि pen and paper, without pen and paper you'll be able to solve, but if you use pen and paper 30-40 सेकेंड्स का क्वेश्चन है. बिकॉज सेम देखो, अगर ये पता चल गया ना तो ये तो बहुत इजी है, मतलब सेम मेथड आपको अप्लाई करना है. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 फॉर मी, because not for me but overall easy question hoga if you know the basics of PNC. So answer A, for question 8 it's option A. Let me quickly check the school of results. uh ठीक है, we'll first solve question 8 and then 9 and then we'll solve another question from the last slot. Please give it a try. J marks of the price with 30 and then gives a discount of 15% addition. Okay. ठीक है. Eight hundred into CP. All right. SP minus CP. 2. ठीक है. 20 more seconds guys. In the meantime मैं comments देखता हूँ क्या चल रहा है comments में. So session in Marathi would be fun. Yeah, would like to take a session in Marathi. Is this LOD? Again, मतलब see guys, if you consider this question to be a tough question, तब तो दिक्कत है, because ये question definitely not more than LOD 1. ठीक है. सिमिलर लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन दिस. एक आध दूसरा वेरिएशन इधर उधर हो सकता है बट डेफिनेटली नॉट मोर देन दिस. So why take 4 digits? Because Harsh, it's mentioned that you have to form a number which is bigger than 2000 and less than 7000. So 2000 to 7000 के बीच में लेना है. That means it's a 4-digit number. Correct? Easy. ये क्वेश्चन क्या है? A leak in the tank can empty it in 12 minutes and another leak can empty it in 18 minutes. So if they work together, ये क्या है? ठीक है. तो इट्स द सिमिलर क्वेश्चन जहां पे इफ ए इज बेसिकली द लीकेज वाला क्वेश्चन, पाइप्स एंड सिस्टम्स. इफ ए इज वर्किंग if A is working on a task, let's say A completes it in 10 days, B completes it in 6 days. So if both of them work together, कितना टाइम लगेगा? Is the same thing. The only thing is यहाँ पे वर्क निगेटिव में जा रहा है बिकॉज एम्प्टी हो रहा है. ठीक है, लीकेज वाला क्वेश्चन नहीं है. तो अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देयर आर 2 अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच इज बेसिकली बाय टेकिंग की भाई अगर 12 मिनट्स लग रहा है सॉल्व करने के, 12 मिनट्स लग रहा है लीक होने के लिए, लाइक पूरा एम्प्टी होने के लिए, तो 1 मिनट में 1/12. इफ दिस कैन एम्प्टी इन 18 तो 1 मिनट में 1/18. इफ यू डू दिस आपको एक आंसर मिलेगा. लेट्स डू इट इन दिस वे पहले एंड देन आई विल एक्सप्लेन द दूसरा वाला अप्रोच. 18 + 12 अपॉन 12 इंटू 18. दिस इज 30 अपॉन कितना आएगा ये? 213 216 789. हाँ ऐसे ही ना. ओके, इज इट करेक्ट? हाँ.
इट्स करेक्ट, राइट. सो ये आएगा आपका आंसर. तो the answer, the actual answer has to be the reciprocal of it, which is 216 upon 30. If we calculate this, we'll get it as 7.2. Yeah, आ गया first method. But the easiest method is to do, the easiest method that we should apply here is to apply the LCM method. LCM method बहुत easy है समझने के लिए. क्या करना है आपको, देखो, you'll have to assume ये जो टैंक है ना, ये इसका जो बेसिकली वॉल्यूम है, दैट इज लेट्स से 36 लीटर्स. नाउ व्हाई 36 लीटर्स मैं बताता हूं बाद में. फॉर नाउ अज्यूम कि जो पूरा टैंक है दैट इज 36 लीटर्स. नाउ एक जो लीक है वो पूरे टैंक को 12 मिनट्स में एम्प्टी करता है. ठीक है. सो इफ 36 लीटर का टैंक 12 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, तो पर मिनट कितना एम्प्टी हुआ होगा? 36 डिवाइड बाय 12, 3 liters फॉर टैंक 1, फॉर द लीक 1. एंड फॉर द लीकेज 2, ये पूरे टैंक को 18 मिनट में एम्प्टी करता है. 36 लीटर को 18 मिनट्स में एम्प्टी करता है. सो पर मिनट कितना एम्प्टी करता होगा? 2 liters. दैट मीन्स लीकेज 1 पर मिनट 3 liters एम्प्टी कर रहे हैं, लीकेज 2 पर मिनट 2 liters एम्प्टी कर रहे हैं. अगर दोनों ने एक साथ काम किया तो पर मिनट ये 3 और ये 2, पर मिनट 5 liters वाटर कम होगा. अभी दोनों एक साथ अगर लीक कर रहे हैं यहां से, दोनों अगर एक साथ लीक कर रहे हैं यहां से, दैट इज पर मिनट अगर 5 लीटर एम्प्टी कर रहा है, तो 36 लीटर एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 36 डिवाइड बाय 5, अगेन 5 7 जा 35, 5 2 जा, सो 7.2 मिनट्स. अगेन द सेम आंसर. ठीक है. एंड वाई 36 इज बेसिकली इट्स द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 12 एंड 18 के टेबल में आए. यू कैन टेक 72 एज वेल, यू कैन टेक 144 एज वेल इफ यू वांट. LCM लेना जरूरी नहीं है, बट for some reason it's called as LCM method, as you know we take the LCM of 12 and 18. Again very basic question. इसमें 12 और 18 देख के ही लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 12 and 18 देख के ही आंसर ऐसा मतलब फट से माइंड में बन जाएगा, इफ यू नो द ओरिजिनल LCM मेथड कैसा यूज करना है. एंड अगेन फॉर दैट रीजन इट्स नॉट इवन LOD 1, it's LOD 0 question. You can even solve it without pen and paper if you know 36 liters average. 36 liters is the total what volume of the tank, and then 3 plus 5, 3 plus 2 5, 36 by 5 7.2. Very easy. ठीक है. All right. Question 10. और question 10 is थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. मतलब you try this question again, it's as the same question that we have solved. देखो if you can see the pattern ना, तो देखो pattern मुझे ये दिख रहा है कि the first 4 questions were almost level 1 level 2, sorry, well almost LOD 0 LOD 1, and then this fifth question was suddenly a level of difficulty 2 question जहां पे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा. फिर उसके बाद देखो from question number 6 onwards, it's again for, again as I mentioned, it's level of difficulty 1 if you know, but it's level of, for me it's level of difficulty 1, then again a level of difficulty 0, then again a level of difficulty 1, then again a level of difficulty 0. So यहाँ पे सॉल्व करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. इफ यू वांट टू सॉल्व इट, I'll give you a minute to solve this question, but we are not going to solve it. We are going to solve it after we are done with this, because I don't want any speed breakers in between. ठीक है. तो एग्जाम में यही आपको सेम मेंटालिटी से जाना है कि स्पीड ब्रेकर्स दिखा, क्वेश्चन अवॉइड करो, नॉट दैट क्वेश्चन तुक्का मारो, बट बाद में आके एक क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है. सो गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट. I'll give you a minute, बट देखो आपको एग्जैक्टली करना क्या है. I'll tell you करना भी क्या है वो भी मैं बता दूंगा, बट इट्स जस्ट दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा बहुत. सो वी आर नॉट गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी. सर एलसीएम लेके माइंड में कर सकते हैं, एग्जैक्टली एलसीएम लेके माइंड में होने वाला क्वेश्चन था वो. ठीक है सर, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट इज 4, ये हो गया. वाई टू टेक 4 डिजिट, ये तो लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है. कूल. ओ आई फॉरगॉट टू टेक क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेना था मुझे. चलो आई विल राइट द क्वेश्चन इन द मीन टाइम, जो लास्ट स्नैप में आया था, बट आई नीड सम स्पेस फॉर दैट. आई इरेज दिस.
You remember? Acha, by the way, this question, let me complete this first. Find the profit percentage. I hope my handwriting is fairly readable. I'll annote this question as well. ठीक है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन द अबव इक्वेशन if the above equation have same roots we have to find p plus q देखो I'll give you the approach to solve this question क्या करना है both the questions are of form ax square plus bx plus c ठीक है and in ax square plus bx plus c if they have the same roots तो क्या होगा minus b by a which is basically your product of the roots sorry minus b by a which is your addition of the roots and c by a which is your product of the roots it is going to be same for both the equation ठीक है सो इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस बी बाय ए विच इज 2p plus 1 oh first of all we'll take c by a which is let's say c upon 2p minus 1 is equals to एक मिनट लेट मी चेक हाँ c अपॉन 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 3c अपॉन q प्लस 1 करना पड़ेगा इन दोनों को इक्वेट करना है फर्स्ट देन इन द नेक्स्ट स्टेप you'll have to equate minus b by a which is 2p by 1 upon 2p minus 1 2p plus 1 upon 2p minus 1 equals to 4q plus 1 upon q plus 1 इससे एक इक्वेशन मिलेगा ऊपर इससे एक इक्वेशन मिलेगा दोनों को इक्वेट करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो p plus q का आंसर आएगा बट इफ यू रियली सॉल्व दिस क्वेश्चन इट विल टेक यू समवेयर अराउंड 2 minutes at least to solve this question. So again, if you really want to leave this question, if you are really getting out of time, then I would say leave करो. अगर आपके पास टाइम है बाद में आके सॉल्व करना है करो बट राइट नाउ ऐसे नहीं करना है कि अभी ये क्वेश्चन पे 2 minutes टाइम दिया एंड फिर यू रियलाइज कि यार नहीं अभी नहीं थोड़ा हो सकता है बट बाद में करते हैं देन यू कम टू दिस क्वेश्चन अगेन आफ्टर यू डन विद दिस वो नहीं होगा इफ यू ऑलरेडी स्पेंड 2 minutes जस्ट मार्क एनी फ्लूक एंड देन मूव ऑन yesterday I mentioned कि अगर आप फ्लूक मार्क करोगे तो भी लाइक 10 फ्लूक्स इफ एवरी फ्लूक इज रॉन्ग 2.5 माइनस होने वाला है सो एक हाथ फ्लूक मार्क करो एंड अगेन स्मार्ट गेस करो बट गेस करके छोड़ दो फिर ऐसे क्वेश्चंस ठीक है हाँ नो कमिंग टू द क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन लास्ट स्नैप में आया था लास्ट वाले संडे वाले पेपर में ठीक है तो the question is Jay mark up the price by 30% and give 50% discount. In addition, he uses 18 gram weight instead of 1 kg. We have to find the profit. So it's a typical example of a faulty seller या फिर cheating seller जो बोलते हैं अपन cheating करने वाला seller उसका example है ठीक है तो जनरली ये क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है सी एक ही मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एंड you'll be able to solve this question. ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल you'll write selling price equals to cost price. ठीक है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अब ये देखो यहां पे आपको क्या करना है दो नंबर्स डालने हैं ठीक है यू हैव टू पुट टू नंबर्स सो द थिंग इज फाइनली हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100 this is the formula to find a final profit percent ठीक है so upon cost price let me check selling price minus cost price cp minus sp upon cp into 100 oh first of all I want you to try this question एक बार try करो like take 30-40 seconds then I'll give you the overall way or overall approach to solve such question एक बार try करो आप and then I'll try this question for you I have given you the like the direction as well उस वे में आपको सोचना है देखो एक बार ट्राई करो you have 40 seconds 30-40 seconds not more than that
इज एग्जांपल ऑफ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फॉल्टी और चीटिंग वाला सेलर. देखो, आई एक्सप्लेन. सो इन सच केस यू फर्स्ट हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन बनाना कैसे वो भी मैं बता रहा हूं. ठीक है, वो सेलर को यू यू कंसिडर यूएसएफ एज अ सेलर. यू टेल मी कॉस्ट प्राइस आपको कितने कितने अमाउंट का कॉस्ट प्राइस मिला. 1 kg का. ठीक है, और वी कैन कॉल इट एज 1000 ग्राम. एक ही यूनिट में लेते हैं. बट सेल करते वक्त आपने कितना किया. 800 ग्राम. यही इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ गया तो पूरा इक्वेशन एक पूरा क्वेश्चन ही इजी है. ठीक है, कॉस्ट आपको मिला 1000 ग्राम का, बट सेल आपने किया 800 ग्राम. बराबर है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग 800 वेट, 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1000. सो नाउ बेसिस ऑन दिस आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है, विच इज बेसिकली फाइंडिंग द परसेंटेज प्रॉफिट. कैसे निकालोगे परसेंटेज प्रॉफिट. हाँ, so SP माइनस CP, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया एंड इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करो. 1000/800. ठीक है, सो वो जो रूल होता है अल्टरनेंडो डिविडेंडो वॉट एवर दे कॉल इट, SP माइनस CP/CP इज इक्वल्स टू 1000-800/800. ठीक है, तो इस बेसिकली कितना आएगा ये. 200/800 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज एट द एंड. बट अभी परसेंटेज नहीं निकालते, दिस इज वन पार्ट. सो ये प्रॉफिट उसके दो टाइप से आएंगे. ठीक है, एक उसका प्रॉफिट आएगा बिकॉज ही इज चीटिंग, उसने कम वेट यूज किया है. सेकेंड उसका प्रॉफिट आएगा बिकॉज उसने प्राइस भी मार्कअप किया है. ठीक है, तो अभी देखो मार्कअप प्राइस इज वेरी इजी. मार्कअप के लिए क्या करना है, लेट्स अज्यूम द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज 100 रुपीज. मार्कअप कर रहा है 30% से, सो वो इज लाइक मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 130 रुपीज एंड उस पे वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है. सो 130 मल्टीप्लाइड बाय 85 करो. 130 का 80%, 85% निकालना है आपको. दैट अमाउंट एंड दिस अमाउंट. ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल प्रॉफिट. सो आई विल डू इट फॉर यू. ठीक है, कैसे करना है. सो फर्स्ट इज 200/800 मल्टीप्लाइड बाय 130 पे 15% का डिस्काउंट. सो लेट्स डू इट. 130 इंटू 85 भी डायरेक्टली कर सकते हो, चलेगा. 130 इंटू 85 करेंगे तो भी चलेगा. सो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रॉफिट आ रहा है 25%, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है वो देखते हैं एक बार. सो 130 इंटू 85 ना 110. सो जो 100 रुपीज का आर्टिकल है वो मैं 110.5 मतलब 110.5 रुपीज में बेच रहा हूँ. सो यहाँ पे मेरा 10.5 का आएगा. ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100. सो बेसिकली आपको 125, सॉरी माय बैड, 125 मल्टीप्लाइड बाय 110.5 एंड इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. एंड वॉट एवर योर आंसर इज दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. ऑफकोर्स यहाँ पे ऑप्शंस देख के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, बट अगर ऑप्शंस इजी होंगे तो ये कैलकुलेशन मेंटली कर सकते हो. आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व है एंड दैट्स वाई थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका ज्यादा है. सो आई वुड काउंट इट एज LOD 2 क्वेश्चन सोनली बिकॉज यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है एंड नीचे वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है. आपको दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. बट अगेन एज आई मेंशन, इफ यू कैन डू द कैलकुलेशन मेंटली, आई थिंक इट अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू ये कितना कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे आप. ठीक है, अगर ऑप्शंस फार अपार्ट है, फेयरली फार अपार्ट है, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शंस एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्या है. अदरवाइज थोड़ा सा LOD 2 इफ वी डोंट हैव ऑप्शंस, बट इफ वी हैव ऑप्शंस एंड जो कि फेयरली फार अपार्ट है, तो आई थिंक इट कैन बी अ फेयरली LOD 1.5 टाइप क्वेश्चन. ठीक है, I'll take this questions in between. ऐसे ही बीच बीच में लेता रहूंगा मैं क्वेश्चंस. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 11 पहले तो विल सॉल्व क्वेश्चन 11 एंड देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 12. प्लीज गिव इट अ ट्राई. तब तक मैं कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के.
but it was a good question. I should appreciate that. What's the final answer? अरे somewhere around 37-38% कुछ आंसर आएगा आपका. 37 और 38% प्रॉफिट, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए. चलो, which question can I take from Snapday one? Let me check. ओह अच्छा, दिस इज द फेमस कुकू बर्ड क्लॉक क्वेश्चन. चलो ये लेते हैं इसके बाद. बहुत लोगों ने कुकू बर्ड किया था, तो ये क्वेश्चन लेते हैं अभी. लेट मी फर्स्ट चेक द क्वेश्चन. कुकू बर्ड क्लॉक टेक्स 6 सेकंड for 6 seconds will it take. ठीक है यार, ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें क्या डिफिकल्ट है. अगेन आई डोंट हैव ऑप्शंस बट आई कैन ट्राई. ठीक है, मतलब ट्राई तो इजीली हो सकता है. क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन होता तो और ज्यादा अच्छा, बट ठीक है, नॉट एन इशू. आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन. Okay, about this question, question 11. A and B speak truth 70 and 80% of the time respectively. अच्छा, मतलब A 70% सच बोलता है, B 80% सच बोलता है. And we have to find the probability that they will contradict each other. What do you mean by contradict? That means A will speak truth and B will not, and vice versa. B will speak truth and A will not. तब तो easy है ना. देखो again, A speak truth is 0.7, speak lie is 0.3. B will speak truth is 0.8, B will lie is 0.2. बेसिकली मुझे करना है ये एंड ये. तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ B will speak truth and A will lie is 0.8 multiplied by 0.3 plus कॉन्ट्राडिक्ट करना है. सो वाइस वर्सा वाला भी लेना पड़ेगा. दैट इज A will speak truth, B will lie. So 0.8 into 3 is 0.24. This is 1.4. If I add them, it is 0.38. Option C. Again, a level of difficulty 0, but solely because मुझे PNC पता है, एटलीस्ट बेसिक्स पता है. अगर मुझे PNC का बेसिक्स ही नहीं पता है तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, इवन दो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगेन लेट मी चेक द कमेंट्स एक बार. So can you give the final answer of the previous question? अरे 38 या 37, मतलब कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, बट समवेयर अराउंड 37-38% आएगा आंसर. युक्ति इट इज 37-38%. बिकॉज अगेन एज आई मेंशन ऑप्शंस नहीं है, तो जो ऑप्शन क्लोज है 37 या फिर 38 से, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन सी. चलो लेट मी क्विकली टेक दैट कुकू बर्ड वाला क्वेश्चन, वो देखते हैं एक बार. अच्छा एक काम करो, यू ट्राई क्वेश्चन 12. इन द मीन टाइम आई ट्राई टू राइट द क्वेश्चन. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. यू गाइस कैन ट्राई क्वेश्चन 12. इन द मीन टाइम आई राइट दैट क्वेश्चन. ठीक है, ये आई एम डिलीटिंग द एनोटेशंस फॉर द क्वेश्चन 11. अबे वो ठीक है, 38.17 इज ओके, बट ऑप्शन तो 38.112 नहीं होगा ना. ऑप्शन में इट इज 37, 38, 39, और वॉज इट वेरी क्लोज आंसर्स, वो एक बार देखना पड़ेगा. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मार्कअप अगेन. देखो मार्कअप इज वेरी इजी. मार्कअप इज वेरी इजी. मार्कअप के लिए ना यू कैन कंसिडर दैट एग्जाम्पल ऑफ डीमार्ट. मैं हमेशा वही एग्जाम्पल बताता हूँ. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज है 100 रुपीज की,
ठीक है। एंड डीमार्ट्स में जो ऐसे शेल्फ होते हैं ना, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ऐसा एक कोई आइटम है लेट्स से, उसके आगे एक ये टैग्स होते हैं, एंड वहां पे इट इज मेंशन कि यू नो 15% ऑफ ऑन एमआरपी, ठीक है, ऑन एमआरपी ये मेंशन होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी प्राइस है ना ये पर्टिकुलर आइटम की, उस पे 15% ऑफ है। बट अभी फॉर एग्जांपल अगर ये अगर लेट्स से कोई एक आइटम है, लेट्स से आइटम ए, ठीक है, वो आइटम की कॉस्ट अगर 100 है, और अगर उस पे डीमार्ट आपको 15% ऑफ दे रहा है, दैट मीन्स 85 रुपीज हो गया, तो डीमार्ट को तो 15 रुपए का लॉस हो गया। तो वो 100 रुपीज का आइटम 15 रुपीज ऑफ देके खुद को लॉस नहीं करवाएगा, वो क्या करेगा, पहले ये 100 रुपीज का मार्कअप करेगा। मार्कअप इज बेसिकली वो प्राइस बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कितने से, लेट्स से 20% से बढ़ा दिया उसने, तो वे 20% से आइटम का प्राइस बढ़ाएगा, बताने के लिए एमआरपी रखेगा 120 रुपीज, एंड नाउ इस पे वो बोलेगा कि मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूं, विच इज दिस। सो कितना आएगा, 120 का 15%, कैलकुलेट करो एक बार। 120 का 15% कितना आएगा यार, 120 इंटू 85 ना, 96, 96 प्लस 2, 102 आएगा कुछ। सो 102 उसका सेलिंग प्राइस होगा। नाउ यू कैन चेक, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, इवन आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट मुझे वो 102 रुपए में बेचना पड़ रहा है, दैट इज 2% का प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्कअप। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। चलो सॉल्व क्वेश्चन 12 एंड आई विल राइट दिस कुकू क्लॉक जो भी है आपका वो। हाँ, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है, जस्ट राइटिंग द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन था इन योर स्नैप का लास्ट अटेम्प्ट, जो था संडे को। स्नैप स्नैप स्लॉट वन, आई थिंक स्लॉट वन था आई बिलीव। ठीक है, पहले विल सॉल्व क्वेश्चन 12 एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। यू गाइज हैव आंसर्स, लेट मी चेक, आंसर आ रहे हैं क्या क्वेश्चन 12 के? क्वेश्चन 12 का आंसर आ गया है, ओके ग्रेट, जस्ट 2 आंसर्स सो फार, व्हाट अबाउट अदर्स? यार अदर्स आर नॉट आंसरिंग इन चैट बॉक्स, ऐसे मत करो। आर यू गाइस जस्ट लिसनिंग? प्रवचन है क्या कोई? हेलो सर, ये क्लास कब से चल रही है? ये क्लास, like my class started at somewhere around 1 o'clock, 1:15, but I think the marathon was going on from 11:30, so almost 3-4 hours you can say. चलो, we'll solve this question. Question 12, easy question, बहुत easy question. Again, you should not use any formula, any binomial express, binomial expansion, nothing of that sort. Simply ये देखो, ठीक है, I'll take an example. What is a plus b whole square? हमेशा याद रखो कि whenever it is a big question ना, try to break it down in smaller questions. तो फॉर एग्जांपल हमने वो जो 10 रेस टू 19 या फिर कुछ और था, मैंने आपको 10 रेस टू 3 करके बताया था,
So whenever there are big questions, na, try to solve it by using the smaller version and then try to apply it for the bigger version. This is the best trick that you can use. So what's the a plus b whole square? Or rather we'll do it for a minus b whole square because यहाँ पे minus है ना तो वो ज्यादा better होगा. So a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. ठीक है. What is a minus b whole cube? It's a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. ठीक है. So if the power is odd, power is even, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस b आएगा. If the power is odd, यहाँ पे माइनस आएगा. And what about the last expression? Last basically expression होगा आपका b square, b cube. Similarly, अगर आपका यहाँ पे a minus b whole raised to 4 होता, तो I don't care about the first expression या फिर first 2-3 steps. I'm just interested in last step, which is plus b raised to 4. ये आता. Similarly, अगर यहाँ पे होता a minus b raised to 5, ठीक है, तो I don't care about the first expression. The last expression would have been minus b raised to 5. तो बस ये this is something that I need to take care of. तो यहाँ पे I need to find the answer of it. Basically मुझे ये निकालना है कि what is the value of a0. तो as it is 6x minus 3 raised to 9, इसका क्या होगा? As it is 6x minus 3 raised to 9, the final term, which is a0, is going to be minus 3 raised to 9. So we just need to find the value of minus 3 raised to 9. अभी minus 3 raised to 9 निकालना है, तो माइनस आंसर आएगा, ऑप्शन ए एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे. अभी आंसर निकालना कैसे? निकालना नहीं है. माइनस 3 रेस टू 9 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस 3 रेस टू 3 रेस टू 3, माइनस 3 रेस टू 3 रेस टू 3. व्हाट इज माइनस 3 रेस टू 3? इज माइनस 27. अभी देखो 7 7 7 तीन बार करना है मुझे, 7 7 7. So I can use the unit digit. 7 sevens are 49, 9 in the unit digit. 9 sevens are 63, 3 is the unit digit. अब तो आंसर has to be negative and आंसर का यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड. तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है या फिर छोटे छोटे मेथड्स है जो यूज करके आप अपने एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स बचा पाओगे इन एग्जाम. यहाँ पे 3 3 9. यहाँ पे किसी ने किया है क्या ये? बाय द वे 27 इंटू 27 इंटू 27 किसी ने आंसर निकालते बैठे हो कोई? चलो और एक ट्रिक बताता हूं मैं. दो आंसर है मेरे पास. अगर मेरा 20 इंटू 20 इंटू 20 होता, ठीक है, ऑफकोर्स माइनस में, तो जाके मेरा आंसर माइनस 8000 आता. यहाँ पे तो 27 है, तो आंसर 8000 से बड़ा आना चाहिए. 8000 से बड़ा आना चाहिए, तभी भी जाके ऑप्शन बी आएगा. तो ये चीजें अप्लाई करो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट लाइक लिटरली फॉर 27 इंटू 27 इंटू 27. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, अपना लास्ट वाला. प्लीज गिव इट अ ट्राई. सॉल्व करो एक बार, देखो. Was this the question in your snap mock one attempt? snap का sorry actual attempt? और कुछ इसमें आगे पीछे कुछ अलग इटरेशंस थे? ये सेम क्वेश्चन था कि इसमें कुछ इटरेशंस थे? समथिंग लाइक दिस. हाँ ठीक है, फिर इफ इट इज ऑन द सेम लाइन देन इट्स ओके. मतलब जिस्ट सेम था, राइट? फिर तो ठीक है. देखो बहुत अच्छा, चलो ठीक है, ट्राई करो. आई गिव यू 30 मोर सेकेंड्स. आई गेस यही था सर. ठीक है, कूल. चलो सॉल्व करते हैं.
बहुत इंट्यूशनल आएगा कि अगर 6 PM पे 6 बार साउंड हो रहा है तो 10 PM पे 10 बार होगा, 10 टाइम्स होगा, तो 10 आंसर मार्क करो, निकल जाओ। ये नहीं होगा ऑफ कोर्स, मतलब इतना इजी नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है ना कि 6 PM पे, अच्छा बाय द वे इसका और एक you'll हैव टू इन्फर समथिंग कि 6 PM पे वो 6 बार यू नो साउंड होगा। तो देखो 6 o'clock पे 6 बार होगा वो, विच इज 1, ऐसे करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार उसका साउंड आएगा, ठीक है। एंड ये 6 बार साउंड आने के लिए इट टुक 6 सेकेंड्स। अभी यू टेल मी 10 PM को कितने बार साउंड करेगा वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बार साउंड करेगा। अभी यू टेल मी इफ टोटल 6 बार साउंड करने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगा, विच इज सो व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन एवरी सिंगल साउंड? व्हाट्स द इंटरवल बिटवीन एवरी सिंगल साउंड? 1.2 seconds, 1.2 seconds, 1.2, 1.2 एंड 1.2, ठीक है। दो साउंड के बीच में इंटरवल इज ऑफ 1.2 seconds. Now in order to do it for this, how many intervals are going to be there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So the answer has to be 1.2 multiplied by 9. It has to be हाँ, एक मिनट, हाँ, 12 5 is 6, so हाँ करेक्ट करेक्ट, it has to be 10.8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। सर एग्जाम में 5 seconds फॉर 5 PM था, अरे ठीक है ना, 5 seconds फॉर 5 PM, अगेन दैट मीन्स 4 इंटरवल्स, 4 इंटरवल ऑफ 5 seconds, दैट मीन्स एक इंटरवल के लिए 1.25 seconds। सो 10 PM 9 इंटरवल्स, 9 इंटू 1.25, 9 इंटू 1.25 करने की जगह 9 इंटू 5/4 करो, 9 5 45, 45/4, इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 11.25, तो आंसर 11.25 आएगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पे द होल पॉइंट इज टू चेक द इंटरवल का टाइम। दो इंटर मतलब बेसिकली दो साउंड्स के बीच में जितना इंटरवल है उसको कितना टाइम ले रहा है, वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको जिस्ट पता चल गया है क्वेश्चन का क्या है। सो 1.2 कैसे? बिकॉज सी 6 seconds इट टुक फॉर 5 इंटरवल्स, ठीक है। 6 बार बजा है, मतलब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, एक बार बजा, मतलब स्टार्ट में एक बार बजा, फिर एक बार, दिस इज द सेकेंड टाइम, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये टोटल 6 टाइम कंप्लीट करने के लिए उसको 6 सेकेंड लगा। सो एक इंटरवल में उसने 1.2 का टाइम लिया, 1.2 सेकेंड्स का टाइम लिया। सो 10 PM पे स्टार्ट करेगा यहां से, फिर 1 सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, 7 8 9 10। सो इंटरवल्स आर गोइंग टू बी 9, which will have to multiply by 1.2 in order to receive at 1 point, in order to get the answer as 10.8. नहीं, यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, बट यूनिटरी मेथड ऐसा होगा कि फॉर 5 इंटरवल्स इफ इट इज 1 पॉइंट, फॉर 5 इंटरवल्स इफ इट इज 6, देन फॉर नहीं हो सकता ना, इसमें तो गलत हो जाएगा ये, कि हो सकता है, हाँ देखो एक बार करके, 54/5, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, यूनिटरी भी तो यूज हो सकता है, बट अगेन यू हैव टू यूज लाइक दिस फॉर 5 इंटरवल्स इफ इट इज टेकिंग 6 सेकेंड्स, सो फॉर 9 इंटरवल्स कितना टाइम लगेगा, यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड एंड यू कैन अगेन गेट द सेम आंसर 10.8, ठीक है। सर एलसीएम नहीं ले सकते? एलसीएम, एलसीएम कहाँ से आया भाई? एलसीएम तो नहीं आएगा। सर फॉर 5 इंटरवल इट टेक्स 10 सेकेंड्स, नहीं, फॉर 5 इंटरवल इट टेक्स 6 सेकेंड्स, 6 था नॉट 10, फॉर 5 इंटरवल इट टेक्स 6 सेकेंड्स, सो फॉर 9 इंटरवल्स इट टेक 10.8, ऐसा है वो। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है धनश्री, क्वेश्चन रीड करो ठीक से, ठीक है।
आई होप इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, बट ठीक है, फिर भी अगर आया सिमिलर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। आ, अच्छा, और एक क्वेश्चन आ गया। ओ, सेम क्वेश्चन तो हमने किया है अभी, तो आई थिंक यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन 13। और बाय द वे दिस क्वेश्चन LOD 1। क्वेश्चन 11 का LOD क्या था? LOD 1। 13, क्वेश्चन 13, प्लीज गिव इट अ ट्राई। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वहीं पे तो गलत हुआ ना, तब तो डायरेक्टली आंसर आपका 10 पे 10 ही आ जाता ना। वही तो चीज है, इंटरवल पे लेना था। दैट्स द ओनली थिंग। लेट मी चेक और कुछ क्वेश्चंस है क्या अच्छे खासे। चलो और एक इजी क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस क्वेश्चन 13। इन द मेन टाइम आई विल, अच्छा चलो यहीं पे लिखते हैं, ऊपर लिख सकते हैं बाय द वे ये क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन 13 एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऊपर जो कि आया था लास्ट अटेम्प्ट में। So a seller uses faulty scale, that it cheats by 300 gram both at the time of buying and selling. Buys and sells only in the packet of 5 kg. He claims to sell it on cost. So what is his actual profit percent? Okay, ठीक है। सी, अभी यहाँ पे भी अगेन सेम लॉजिक यूज करना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यू टेल मी, बेचते वक्त, ठीक है, सेलिंग इज दिस ना, मतलब एज अगेन यू आर अ मर्चेंट, ठीक है, यू आर अ फॉल्टी सेलर, ठीक है। आप बेचते वक्त कितना बेच रहे हो? 700 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम कम कर रहे हैं ना वो, बट कॉस्ट आप कितने का लगा रहे हो? 300 ग्राम मोर का लगा रहे हो, विच इज 1300।
ये आपको जस्ट एक फंसाने के लिए दिया है, गुमराह करने के लिए दिया है, ये स्टेटमेंट का कुछ यूज ही नहीं है। वी नीड टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो इतना ही क्वेश्चन था कि 700 ग्राम सेल कर रहा हूं, कॉस्ट ले रहा हूं मैं 1300 ग्राम का। सो again let's do it like this: sp upon cp is equals to 1300 upon 700. And if I want to find the profit percent, we are going to do it like this: 1300 minus 700 upon 700 into 100. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 600 upon 700 into 100. Okay. Okay, let me check. If he claims to set on cost, what is his actual profit percent? Okay, if we solve this, we'll get it as 600 upon 7. कितना आएगा आंसर? 56 4 85.7. अच्छा, कुछ तो ऑफ जा रहा है, आई थिंक कुछ तो मिस किया हमने, राइट? आई थिंक ये गलत हुआ, आई थिंक फिर मेरा परसेप्शन गलत हुआ ये क्वेश्चन का. लेट मी रीड दिस क्वेश्चन अगेन. A seller uses faulty scale that he cheats by 300 gram both at the time of buying and selling. Oh, okay. My bad. I think मैंने गलती किया फिर. If he sells and buying the packet of 5 kg, na? Sorry. So I thought it is just to misguide you, but it is not to misguide. It's basically आप अगर बेच रहे हो 300 kg 300 ग्राम कम बेचोगे, बट आप कॉस्ट कर रहे हो तो वो 300 ग्राम ज्यादा कॉस्ट करोगे बेसिस ऑन 5 kg. ठीक है, तो इट इज नॉट 700, रादर इट इज 5 kg माइनस 300 ग्राम, सो 4700. एंड अगर सीपी निकालोगे इट इज नॉट 1300, इट इज 5300. ठीक है, सो अभी अगर आप निकालोगे एसपी माइनस सीपी, ठीक है, अभी अगर आप ये सेम कैलकुलेशन करोगे तो लेट मी क्विकली डू इट फॉर यू. SP minus CP is 5300 minus 4700. If I calculate it, it is 5300 minus 4700 upon 4700 multiplied by 100. Okay. So numerator we have what? 600? 600 upon 4700 multiplied by 100. So let's say cancel this. I'll be left with 600 upon 47. देखो 600 अपॉन 47 तक तो अपन लोग आ गए, बट अभी आंसर्स इफ आई चेक, आंसर्स बहुत क्लोज है इसके, एंड दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. बट इफ यू रियली डू इट, कैसे करेंगे इसको देखते हैं अभी. देयर इज नो अदर वे यार, करना ही पड़ेगा इसको, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करते तो भी चल जाता है. अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं इसमें देखो कि इंस्टेड ऑफ 47 लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इट इज 46. ठीक है, लेट मी इरेज दिस. Not 47, sorry. Let's instead of 47, let's assume that it is 48. अगर ये 48 होता ना तो क्या आंसर आता देखो. अगर ये 48 होता, 600 अपॉन 48 होता, तो 12 4 जा 12 5 जा, एंड देन आंसर वुड हैव बीन 12.5%. सो इसको कम करने से ये आंसर 12.5 से बड़ा होना चाहिए, विच इज क्लोज टू 12.5 बट ग्रेटर देन 12.5. So close to 12.5 and greater than 12.5. Again, I have two options, and that's basically makes this question a little difficult to answer. ठीक है, इसका और कैसे कर सकते हैं यार? और तो कुछ मेथड दिख नहीं रहा है, बिकॉज यू जस्ट बेसिकली हैव टू डिवाइड 647. एट स्नैप में अपने पास कैलकुलेटर भी नहीं होगा, तो ये करना वहां पे जाके फंस जाओगे, एंड यू विल बेसिकली एंड अप मार्किंग ऑप्शन डी. बट इफ यू रियली डू इट, इसका आंसर आई थिंक देखो एक बार कैलकुलेट करके एक्चुअल कैलकुलेटर से क्या आएगा. तब तो ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, बिकॉज देयर इज नो अदर वे यू डू इट विदाउट यूजिंग कैलसी, एंड दैट टू ऑप्शंस भी अगर इतने क्लोज दिए तब तो इट्स 12.76. इट्स कमिंग एज 12.765. 765. As I mentioned, it is option A and not option D.
but it will basically become very impossible question to solve if you really don't, because 47 का टेबल तो किसी को पता नहीं होगा, एंड फिर करने में अगर वर्स्ट केस करना ही है तो मतलब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, जो अपन लोग करते थे बचपन में, 600/47, 47 वन जा 47, 13 0, देन 47 जो भी आएगा, 47 टू जा 70, कितना आएगा, 47 टू जा 70, नहीं सॉरी, 47 टू जा 94, तो ये 94 आएगा, यहाँ पे इट इज 36 0, ये आ गया, फिर 47 इंटू वॉट, हाँ अगर ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 आएगा तो आपको पता चलेगा इट इज 12.7 एंड नॉट 12.6, तो ये करना पड़ेगा आपको वर्स्ट केस में, बट अगेन इतना टाइम तो है नहीं, एंड दैट मेक्स दिस क्वेश्चन एज LOD 2 to 3, सोनली बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर 12.7 की जगह अगर यहाँ पे, सॉरी, इंस्टेड ऑफ 12.67 अगर यहाँ पे 11.67 होता ना, तब तो डेफिनेटली अपन ए मार्क करते हैं, बट सोनली बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व इन एग्जाम एक्यूरेटली, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सॉल्व करना एग्जाम में ये क्वेश्चन, अगर ऑप्शंस ये होंगे तो, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन जो कि लास्ट अटेम्प्ट में आया था, जो मैंने ऊपर लिखा है, होप माय हैंडराइटिंग इज रीडेबल। I'll read this question for you. There are 108 candies with 3 flavors: chocolate, mango, and strawberry. Probability of choosing chocolate candy is 1/3, and the probability of not choosing, probability of getting बोलना पड़ेगा, है ना? Probability of getting a chocolate candy is 1/3, and of mango is 4/9. Find the total number of strawberry candies. Please give it a try. Not more than 30-40 seconds. Easy question है बहुत. देखो एक बार. मैं तब तक कमेंट चेक करता हूँ. हाँ, 12.67, 12.77, divide 300 by 5 to get 1000 grams. Sir, profit will be in net quantity and remaining. ठीक है. Options are very close, so approximation don't work. That's exactly what I meant. Sir, can we do it by successive addition by percentage? He gains 6.3 while buying and also gains 6 by then. नहीं यार, 6 वो कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा ना, इसमें तो फिर गलत हो जाएगा, करेक्ट, एंड विल बी मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, कि गलत आंसर ही गलत आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, मतलब अगेन बेसिक्स भी पता नहीं होंगे जिसको प्रोबेबिलिटी के, उसको ये तो पता होगा कि अगर 108 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट कैंडी इज 1/3, सो हाउ मेनी चॉकलेट कैंडीज आर देयर आउट ऑफ 108, सो इट्स 108 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, आई विल डू इट मेंटली, ठीक है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कितना आएगा ये, 3 3 आर 9 एंड 3, सो 36 कैंडीज आर चॉकलेट, ठीक है, मैंगो का 4/9 है, सो अगेन इट्स 108 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, सो 9 1 जा 9 2 जा 12 4 जा 48, सो 48 मैंगो कैंडीज, 36 आपके चॉकलेट कैंडीज आएंगे, सो 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 राइट, हाँ, एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, 9 1 जा 9, हाँ, 36 प्लस 48, 12 7 जा 84. So out of 108, 84 candies are mango plus chocolate. So 108 minus 84 कितना आएगा? It's 24. 108 minus 84, yeah, it's 24. So answer has to be 24. ठीक है, मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, तो ये इतना इजी था, इट्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0, इसका कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ही नहीं, ठीक है। गर्वित देखते हैं यार, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे क्या सीन है, ठीक है, आई लेट यू नो। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब आई डोंट थिंक सो अगर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी था तो बहुत इजी था, बिकॉज आई हर्ड कि इस बार प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आए थे, बट आई एम श्योर अगर 5-6 भी क्वेश्चंस आएंगे, लेट्स से इफ देयर आर इवन 7-8 क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली मोर देन 5 to 6 क्वेश्चंस आर ऑफ इजी डिफिकल्टी, 2-3 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, दोस आर नॉट अ लिटिल बिट on a difficult side, not a difficult side, if not on a difficult side, maybe some time consuming questions, तो या
All right. If you guys are enjoying this session, so please do hit a like. थोड़ा सा देखते हैं अपन अभी. We are on 169 likes. Let's cross 200 likes. जिसने नहीं किया है प्लीज लाइक करो यार. सेलर यूजेस 40 के लिए तो हो गया. ठीक है. एबीसी रिलेटिवली को प्राइम लॉजिक में जीके आया था सर इस बार. या आई नो इस बार आया था. एक्स पीपल कैन डू. ठीक है. अगेन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन 14 बट एक बार ट्राई करो. क्वेश्चन 14 अगेन इट्स अ स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 111 ये एलओडी 2 था फॉर मी. ठीक है. बट इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत देगा एंड दैट इज दिस क्वेश्चन. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एट द एंड. एक बार ट्राई करो आप लोग. चलो मैं तब तक देखता हूँ क्वेश्चंस. नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द. ठीक है. हम्म. ठीक है. इसके बाद और एक प्रोबेबिलिटी का करेंगे. अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ठीक है. वी विल डू दिस. चलो आई विल राइट दिस क्वेश्चन इन द मीन टाइम. यहाँ पे आई विल राइट दिस क्वेश्चन. There are 9 players. There are 9 players. Okay. 2 from France. 3 from Croatia. And 4 from Netherlands. All right. In how many ways can we select 3 players such that at least one is from Croatia? ठीक है. तब तक आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन 14 अगेन. देखो. सो क्वेश्चन 14 आई वुड से रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं मतलब इटरेशंस इन्वॉल्व. ठीक है. विल हैव टू फाइंड कि 551 कैसे आएगा बाय मल्टीप्लाइंग टू रिलेटिवली कोप्राइम नंबर एंड फिर आउट ऑफ विच वन नंबर इज कांस्टेंट विच इज बी एंड फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करके अगेन दैट हैज टू बी रिलेटिवली कोप्राइम नंबर. ऐसे करके विल हैव टू ट्राई सम इटरेशंस. बट करने के नाम पे देख सकते हैं एक बार इटरेशन लगा के देखते हैं फिर भी कुछ आएगा क्या आंसर. कोप्राइम नंबर्स तो you must be aware of coprime numbers, right? That only one common factor has to be there, that is 1. Apart from that no common factors are there. Okay. So for example 13 and 17 is a pair of a coprime number. Okay. 13 and 17 there is only one common factor which is 1. All right. So A and B. Let's see how can I get 551. So
in order to start, I can say एक मतलब रैंडम नंबर लेते हैं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। चलो 7 इंटू 7 7 49, 6, 7 से डिविजिबल है ये नंबर? नहीं है, तो नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 तो नहीं आएगा बिकॉज 11 का आई कैन सी डिविजिबल नहीं है, 12 नहीं आएगा, 13, लेट्स ट्राई विथ 13। 13 4 जा, नहीं 13 से भी नहीं है। चलो 14 15 16 17, लेट्स ट्राई इट विथ 17। नहीं आ रहा है 17 से, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 19, 19 तो 38, हाँ ये आ रहा है देखो, 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है, राइट? 19 मल्टीप्लाइड बाय 19 to 38, 38 and it is 17, 19 nines are. So 19 and 29, are they co-prime? Yes, they are co-prime. So now the next thing is, abhi easy hai. Next thing is, it is either 19 into 29 or it is 29 multiplied by 19, because we never know A is greater than B or B is greater than A, right? So ऐसा कौन सा number है from 19 and 29 which is getting divisible by 1073? This is something I need to check. So पहले 19 से करते हैं because I know the 19 का टेबल, 29 का टेबल मुझे भी याद नहीं है honestly, प्रैक्टिस नहीं है मेरी बहुत ज्यादा। So 19 5 जा 95, ठीक है। 95 107 minus 95 is what? 112, नहीं नहीं जा रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, सो 29 ही करना पड़ेगा। so, चलो 29 का टेबल देखते हैं। 29 3 जा, राइट? नहीं, हाँ 29 3 जा, 29 3 जा 87, so 203 and it has to be 7 then। 29 7 जा, 29 7 जा, हाँ करेक्ट, दिस इज 37 and that's the reason 27 and 37 these are again co-prime numbers, तो ये तो बैठ रहा है। तो दिस इज द इटरेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये इटरेशन लगाना पड़ेगा। द नंबर्स आर 19 29 and 37 and I just need to add them। इसका यूनिट डिजिट ऐड करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है? 9 plus 9 8, 8 plus 7 5, 85 has to be the correct answer, option B। but solely because बहुत ज्यादा iteration involved है, I would mark it as a level of difficulty 2 question, solely because iterations करना पड़ रहा है, otherwise तो easy था। but it is, अगर यहाँ पे had it been given here that A is less than B is less than C, it would have been a very easy question। it's not given, so that's the reason it's LOD 2, but definitely not a level of difficulty 3। I can come back to this question and then I can solve, provided that I have some time in my hand। ठीक है, तो ये हो गया अपना 14 and now let's move on to the question। last snap का पेपर का क्वेश्चन था, let's try this question। I'll give you maybe a minute to solve the question because थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव लग रहा है मुझे। let's see क्या होता है। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं कमेंट्स देखता हूं तब तक। चलो लॉजिक में इस बार था टा 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 टा। कूल कूल, ठीक है। हर्ष, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। डेफिनेटली यस, टाइम कंज्यूमिंग है, लीव करो। बट ये वाला क्वेश्चन का एलओडी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ही आ जाए, बिकॉज सी आई नो कि इसका ऐसे ही होगा, इसका सेट एक तरीका है, उसी से सॉल्व होगा। तो वो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली एलओडी 1 फॉर मी। दिस क्वेश्चन इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। आई फॉरगॉट टू मेंशन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। तो देखो, कुकू बर्ड डेफिनेटली एलओडी 1, ठीक है। देन ऊपर जाओ, हाँ कैंडीज वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एलओडी 0।
ऊपर जाओ, मार्कअप प्राइस, हाँ ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 हो सकता है, एज आई मेंशन ये एलओडी 2 हो सकता है, बिकॉज अगेन एज आई मेंशन दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको एक साथ करनी है। फिर ऊपर जाओ, और कोई क्वेश्चंस था ऐसे? आई थिंक एक क्वेश्चन किया था ना हमने, और एक मैंने रब कर दिया शायद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स विल आई लेट यू नो द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, which is this. In the meantime, I'll check. Sir, okay. चलो देखते हैं, we'll solve it together. So if you remember, this is a question which is very much similar to what we have covered in class. Exact class में ये टाइप का क्वेश्चन किया था कि there are five male and 4 female. In how many ways can I select a team such that it has at least 3 men? So what we have done is, उसमें दो ही चीजें इन्वॉल्व थी, सो हमने क्या किया था, चार डिफरेंट तीन पॉसिबिलिटीज लिए थे, वेर वी हैव 3 men 2 women, 4 men 1 woman, and all 5 of them are men. In this case, if it is mentioned that there are 3 players and at least one is there from Croatia, ठीक है, at least one, so we'll take the cases, all the cases. So देखो, at least one from Croatia, 2 from France, this is one case. Second, one from Croatia, 2 from Netherlands. Next case, one from Croatia, one from France, one from Netherlands, ठीक है। Next, 2 from Croatia, 1 from France, 2 from Croatia, 1 from Netherlands, 2 from Croatia, yes, and finally all 3 from Croatia. So इसको बस हम लोगों को अभी एनसीआर के फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो वी हैव व्हाट 6 डिफरेंट केसेस। सो फर्स्ट मैं पहले का यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो 1 फ्रॉम क्रोएशिया, ठीक है, इट इज 3C1, एंड है तो मल्टीप्लीकेशन, 2 फ्रॉम फ्रांस, सो 2C2 प्लस 3C1 multiplied by Netherlands, 4C2 plus 3C1 multiplied by 2C1, because 1 from France, out of 2 1, so 2C1 multiplied by 4C1 plus, we have covered this and this. Now 2 from Croatia, so out of 3, so 3C2 multiplied by 2C1, because 1 is from France out of 2, plus 3C2 multiplied by 1 Netherlands out of 4, एक मिनट, 2 1 3 1 1 1 3, हाँ, so 1 Netherlands out of 4, 4C1, and plus all 3 of them are from Croatia, 3C3. अभी यहाँ पे कुछ नहीं यूज करना है, बस प्रॉपर्टीज यूज करना है। व्हाट इज NC1, क्या आएगा इसका आंसर? NC1 का आंसर क्या आता है? ठीक है, नहीं पता है, एक बार कर लो। 3C1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3C1 इज नथिंग बट 3, दैट्स व्हाई NC1 का आंसर हमेशा n आता है, दिस इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCN? इट्स ऑलवेज 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, सो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ये सॉल्व करना पड़ेगा, 4C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। 4C2 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, 6 आएगा ये, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3C2 is nothing but 3C1, so 3 into 2 plus 3 into 4 plus 1, right? So 3 plus 6 3 is 18 plus 24 plus 6 plus 12 plus 1. Are we covering all 6? 1 2 3 4 5 6, yes. So इसका एडिशन करना है बस, 24 6 30 30 30 60 64 64. So answer has to be 64 possibilities. Again, टाइम कंज्यूमिंग है,
डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट दैट 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, एंड एडिशनल थिंग इज सबका अलग अलग कंसिडर करना है। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आंसर आ जाए। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस, एज आई डोंट हैव ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस मेरे पास होते तो आई वुड हैव मार्क द आंसर इजीली, बट solely because it's a time consuming question, I would categorize this as a level of difficulty 2, solely because it's a time consuming question, ठीक है। other than that it's very easy। अगर यहाँ पे वो मेल फीमेल वाला होता तो मैं तो डेफिनेटली LOD 1 ही बोलता है क्वेश्चन को, ठीक है। लेट मी रीड योर कमेंट्स। यार टोटल माइनस नन तो नहीं कर सकते, बट इट्स अ गुड आइडिया, लेट मी ट्राई दिस। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट 1 है तो वी कैन से नो प्लेयर्स ना। ओके, तो इसका एक इंटरेस्टिंग और एक वे किसी ने बोला है जो मुझे भी क्लिक नहीं हुआ था, तो मैं बस आपको बताने के लिए बताता हूँ, यू कैन ट्राई इट आउट लेटर। तो क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वी कैन हैव एटलीस्ट 1 प्लेयर फ्रॉम क्रोएशिया। तो इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे करो, out of total possibilities you'll have to subtract the possibilities where we have no one from Croatia, but again I think that is again same like time consuming ही होगा। इससे अच्छा, ज्यादा माथापच्ची करने से अच्छा थोड़ा 2 मिनट, 2 मिनट नहीं बट 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगाओ और ये करो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। कूल। क्या आएगा रोशनी, इसका आंसर बताओ एक बार, देखो एक बार आंसर बताओ, अदरवाइज वी कैन डू दिस एज वेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15। ठीक है गाइस, सो कैन यू सी, इतना भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा नहीं था लास्ट टाइम का, मतलब लगता है कि थोड़ा सा ये, इट इज जस्ट दैट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, एंड आई मेंशन कि इफ इट इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर अदर्स एज वेल। सो पिकिंग एंड चूजिंग अ करेक्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली, इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल देयर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ तब तक। ओके, वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, सेम लेवल का क्वेश्चन है, गुड। ये तो 21 का है। इसके बाद वी आर डायरेक्टली बी डूइंग अ क्वेश्चन जो लास्ट अटेम्प्ट में आया था ऑन द सेम वर्क, टाइम एंड वर्क पे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो, एक्स पीपल कैन डू अ जॉब इन 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम डे 3, पीपल 3 people वर फायर्ड एवरी अल्टरनेट डे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डे 2 2 people वर हायर्ड एवरी अल्टरनेट डे। सो वर्क डन इन 7 days, we have sorry, work done in 7 days and we have to find the x, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x people can do a job in 5 days, let's say 10 people can do a job in 5 days, so total amount of work कितना होगा, x multiplied by 5, ठीक है। तो we'll first write the total amount of work is equals to, और यहाँ पे लिखते 5x। now starting from day starting from second day 3 people were fired, तो देखो पहले दिन कितने लोगों ने काम किया, x लोगों ने काम किया, एंड x काम हो गया।
सेकेंड डे से क्या हो रहा है, 3 लोग निकल जा रहे हैं, ठीक है, 3 लोग निकल जा रहे हैं एंड देन ऐड होते जा रहे हैं. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस. तो देखो एक बार मैंने आइडिया दे दिया आपको. नाउ विल यू गाइस बी एबल टू सॉल्व इट? ट्राई करो एक बार. समझ में आ रहा है कि विल डू इट टुगेदर? देखो फर्स्ट डे एक्स लोगों ने काम किया, सेकेंड डे x-3 लोगों ने काम किया, बिकॉज अल्टरनेट डे अभी 3 3 लोगों निकाल भी रहे हैं. उसके बाद क्या होगा, 2 लोग ऐड हो जाएंगे विच इज x-3 प्लस 2, सो विच इज x-1. उसके नेक्स्ट डे 3 लोग फिर से निकल जाएंगे, x-4. उसके नेक्स्ट डे 2 लोग ऐड हो जाएंगे, x-2. उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, 3 लोग फिर से निकल जाएंगे, x-5. एंड फाइनली क्या होगा, इसके बाद फाइनली x-3 एन अल्टरनेट डे, तो 2 लोग ऐड हो जाएंगे विच इज x-3 ना, हाँ x-3. एंड ये टोटल जो है वो 5x होगा, बिकॉज दिस इज टोटल वर्क, राइट? So number of days are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this addition is equals to 5x. Now we just need to add everything. So x 7x minus 3 minus 1 minus 4 minus 4 minus 8 minus 2 minus 10 minus 5 minus 8. एक सेकेंड, मैंने क्या किया अभी, -4 -4 10 minus 18. 7x minus 18 is equals to 5x. So this will go on this side, this will go on left hand side. So 2x is equals to 18, the value of x is equals to 9. This is what we need to find the value of x. The answer is 9. ठीक है, इजी क्वेश्चन इफ यू नो द बेसिक कि x लोग अगर 5 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना होगा. एक काम करते हैं सेम लाइंस पे ना, आई हैव अ क्वेश्चन, एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट दैट ओनली, तो वो क्वेश्चन करते हैं. कहाँ पे गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन सेम लेवल पे था. आई वॉज जस्ट चेकिंग कि इसका लेवल सेम ही है क्या, बट आई थिंक द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू उसका क्वेश्चन तो इससे भी कम है. दिस इज अ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 फॉर मी अगेन, बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, अदरवाइज LOD 1. द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू नाउ इज गोइंग टू बी डेफिनेटली LOD 1. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, दिस वॉज अगेन लास्ट अटेम्प्ट में आया था कि 2 person A and B complete the work in कितना days, 24 days. B alone can complete the work in 32 days. If both worked for 8 days and then B left, then how many more days will A take to complete to finish the work? Then find days worked by A, find days worked by A to finish the remaining work. Chalo, give it a try. ओके, क्वेश्चन लिखने में ही जान चली गई भाई. क्वेश्चन है तो बहुत चिंदी, बट लिखने में बहुत टाइम लग गया. कोई नहीं, चलो. You can see 96 is there, so 32, 24, 4 जा
threes are, ones are 96. Both of them for this. So 96, which is okay. 8 days, no? So 8 into 4, 24. 96 minus 24 is 72 divided by, हाँ इजी है फिर तो, मेंटली आ गया आंसर. चलो लेट मी रीड द कमेंट्स. अरे 188 ही लाइक्स है अभी भी. अच्छा 193 हो गए. अभी 7 लाइक्स, वी नीड 7 मोर लाइक्स. लेखक, आई होप यू गॉट योर आंसर. देखो, आई डू इट, आई सॉल्व इट. ठीक है. Two person A and B complete the work in 24 days alone and 32. Okay. So basically, if A and B, if they work together, they take 32 days. And if B is working alone, then it will take 32 days. Sorry. If both of them do it together, they'll take 24 days. And if B alone do it, then it take 32 days. So इसमें we'll have to take the LCM of 24 and 32. And I can see 96 is LCM. 96 is LCM. Okay. Now that means if A and B work together, they will do 24, 96 divided by 24. 96 divided by 24, which is 4 units per day. And if B works alone, he will do 3 units per day. That means A will do 1 unit per day. So in order to finish 96 units, he will take 96 days. So total number of work is 96 units. And A को अगर काम पूरा खत्म करना है तो 96 days लगेंगे. अभी the question is both work together for 8 days. एक दिन एक साथ काम करेंगे, 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. 8 दिन काम करेंगे, 8 4 32 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा. रिमेनिंग कितना आएगा? 64 यूनिट्स. ए एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करता है. 64 यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए उसको 64 डेज लगेंगे. एंड दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर. एंड दैट्स द रीजन आई कॉल इट एज LOD 1 क्वेश्चन. बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है. वी जस्ट नीड टू फाइंड the number of days required for A to complete the work. फिर we know A and B अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट्स करेंगे. 8 4 32. Subtract it from the total number of units. 96 minus 32, the answer is 64. A does 1 unit per day, so 64 divided by 64, the answer has to be 64 divided by 1, the answer has to be 64 days. Very easy question. ठीक है, बहुत easy था. Next question, question 16. Correct.
Okay, again I don't know the actual way to solve this question, ठीक है, but there is a good trick to solve this question. देखो, A and B are of similar sides, and B is, so basically A and B I can consider them as a congruent triangles, and B are 3 times side of A. The side of B is 3 times side of A. So for example, if this is A, let's call it as A. This is suppose A, and this on the other hand, let's say is B. देखो A का जो एक साइड है ना, वो B का इतना आ जाएगा. I'll use the different annotation rather. हाँ, ये एक साइड आ जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे उसका एक ट्रायंगल बैठ जाएगा. सिमिलरली वी हैव टू सच दिस थिंग, राइट, टू थिंग्स लाइक टू सेम साइड के दिस थिंग. तो यहां पे वी कैन अकोमोडेट वन मोर ट्रायंगल एंड वन मोर ट्रायंगल लाइक दिस, एंड फाइनली 1 2 3 4 and 5. So total we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If the triangle, अपना क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट द एरिया इज ग्रेटर, सेम एरिया है, अगर 9 टाइम्स बड़ा हो गया तो इंक्रीज कितना होगा, 800% से होगा. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो फॉर एग्जांपल इसका इफ 100 स्क्वायर मीटर इज द एरिया, इसका इज गोइंग टू बी 900 स्क्वायर मीटर्स. सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, which is 900 minus 100 divided by 100 into 100. If we solve this, we'll get it as 100%, sorry, 800% increase in the area. So rather than doing it by a technical or normal approach, I don't know if we can solve it by using the normal method. If we use the logic से करोगे तो बहुत ज्यादा easily आंसर आ जाएगा. बहुत easy question था, LOD 1 question था. ठीक है, let me check if I can take this question. A person for 100, 18 razors for 100, pens for this, and says the book at 300 for a dozen. Okay, ठीक है, ये कर सकते हैं सॉल्व. लेंदी क्वेश्चन है, लिखने में टाइम जाएगा, बट आई कैन राइट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई विल राइट दिस क्वेश्चन, अदर आई शुड हैव टाइप्ड दिस क्वेश्चन, बट ठीक है चलो. क्वेश्चन इज, लास्ट टाइम का क्वेश्चन है ये. आई विल राइट इट इन शॉर्ट, ठीक है. पर्सन बाय बुक्स एट 1800 for 100, erasers at 150 for 100, pens at 425 for 100. Okay. He sell books at 360 for a dozen. Erasers at 30 for a dozen. Pens at 65 for a dozen. So my question is, on which two items she shared the same profit? On which two items she, that is the person, shared the same profit? तो करना क्या है, बेसिकली मुझे सबका सेम प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी नॉट प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट परसेंट. तो करना क्या है मुझे, तो बेसिकली आई नीड टू फाइंड अ प्रॉफिट परसेंट फॉर एवरी आइटम. तो अभी करना कैसा है इसको, हर एक का निकालने से अच्छा देखो,
बुक्स उसने कितने को लिए? 1800 फॉर 100. सो व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक? 18. सेल करते वक्त 360 फॉर ए डजन, दैट मीन्स 360 को 12 बेचे, सो एक का प्राइस आएगा 30. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. Second, eraser she bought 150 for 100. So the price of one eraser is 1.5. At the time of selling, she sold 30 for a dozen. So 30 divided by 12, it is कितना आएगा? 2.5. It's 2.5. And finally, pens for 4.25 for 100. So price of one pen while buying, the price of one pen will become 4.25, and while selling, it's 65 for dozen. So 65 divided by 12. Okay, 12 5s are 60. Whatever, we'll keep it as it is. Okay, for now, we'll just keep it as it is because it will help me solve the question easily. Okay, so we just need to find the profit, right? तो इसको करने में बहुत इजी है. वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो, दैट्स इट. रेशियो देखो, किस दो का रेशियो सेम है, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. So, see, ultimately, what are we going to do in order to find the profit? Let's say for this, we'll do it like this. Now, 30 minus 18 upon 18 multiplied by 100. So, it is basically 12 by 18. 12 by 18 is what? 2:3. ये यहाँ पे चेक करने से अच्छा, अगर आप यहाँ पे ही रेशियो चेक करोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा. So, 18 upon 30 is basically 6 3s are 6 5s are 3 upon 5. 15 upon 25 is nothing but 3 upon 5. But 4.25 upon 62.5. I don't care because यहाँ पे दोनों का ही आंसर सेम आ सकता है. The question is on which two item it share the same profit. तो मेरा आंसर तो वैसे ही आ गया. तो why should I check it for the pen? Answer has to be books and erasers. So again, बहुत easy question. बहुत easy question. LOD 1 question. But guys, can I check? I can check कि देखो level of difficulty question का more or less ठीक ठाक ही है. It is just that from the questions I can see कि length of the question बड़ा हो गया है. ठीक है, तो might be the problem is कि length थोड़ा सा issue हो सकता है, but otherwise when I go into the depth of question उतना difficult है ही नहीं. So even अगर अपन ने अभी तक जो 6-7 क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया, आई कैन चेक एक हाथ क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 होगा. एक भी क्वेश्चन अभी तक एलओडी 3 नहीं मिला मुझे फॉर सम रीजन. एलओडी 2 भी मिला तो भी उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है. अदरवाइज क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, सो या ओके, अपन क्विकली एक काम करते हैं. अपन क्विकली देखते हैं कि और कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे. ये तो ठीक ही है, मतलब अपन नॉर्मल फॉर्मूला से कर पाएंगे. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत बार बताया है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली दे विल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन एंड बहुत बार ये आया भी है. इस बेसिकली एक बॉल है, वो 4/5 हाइट पे आता है बाउंस बैक होके. एंड इस बेसिकली अगर 300 मीटर से ड्रॉप किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. वी आर गोइंग टू यूज द इनफाइनाइट जीपी फॉर्मूला. S infinity is equals to A upon 1 minus R. This is the formula that we are going to use. But the only case here, the only problem here is if we use it, see, A is 300, 300 upon 1 minus 4 upon 5. So this will be somewhere around, कितना आएगा ये 5 5 ना. हाँ, so it will be somewhere around 1500. But 1500 तो आंसर में है ही नहीं, because हम लोग ये जो काउंट कर रहे हैं, ये बस हम लोग ये वाला डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं. This distance. We are not counting this distance. तो ये काउंट करने के लिए अगेन आई हैव टू कंसीडर A एज 4/5 ऑफ द हाइट. सो 4/5 ऑफ 300 कितना आएगा ये 240. So again I'll have to apply the same formula. 240 minus 1 upon 4 upon 5. It will be around 525 5 24 5 1200. So now the answer is 1500 and 1200, which is option D 2700. बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम बहुत इजी है. LOD 1 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप यू विल ट्राई इट अगेन इफ यू गाइस वांट, बट बहुत इजी क्वेश्चन है. और कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या? लेट मी चेक. सॉरी,
ये भी देख सकते हैं, देखो 6% of the student attempting the exam were from Gujarat and from Assam. Sorry, 6% of the students attending the exam were from Gujarat and from the state of Assam. The same number of people appeared for the exam. So, for example, 6% only. 7% of the people cleared the exam, which was 80% more than those from Gujarat. So, 6% appeared, 7% cleared. So, this gap of 1% is equals to 80. Okay. So, for example, that means 1% is equals to 80. So, 6% कितना होगा? 8 6 480. And this is from Gujarat, and same number of people were from Assam. So 6%, that is 480, same number of people were from Assam. So finally we need to find the number of people from Gujarat and Assam. We just need to add them and we'll get our answer as 960, option A. Again, बहुत easy question. LOD 0, mentally solve कर सकते हैं. ठीक है, let me quickly check कि ऐसे कोई और question आए थे क्या अच्छे खासे जो कि ट्रिकी थे, बिकॉज अदरवाइज इफ दिस आर द नॉर्मल क्वेश्चंस तो वो तो सॉल्व कर ही पाओगे आप लोग, मतलब टेक्निक से. बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कोई टेक्निक ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या. लेट मी चेक. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. जस्ट गिव मी 2 minutes. चलो, लेट मी रीड योर कमेंट्स नाउ. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में पूछो भाई, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. 960. देखो 6% आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम वर फ्रॉम गुजरात. ठीक है, 6% वर फ्रॉम गुजरात एंड द सेम वर देयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम. तो 6% वर फ्रॉम आसाम. अभी देखो 7% ऑफ द पीपल क्लियर द एग्जाम. तो टोटल 7 out of 100 7% लोगों ने क्लियर किया है, विच इज 80% मोर देन दोज हु हैव अपीयर्ड फ्रॉम द गुजरात. तो गुजरात से कितने अपीयर किए थे? 6%. क्लियर कितने हुए? 7%. So this 1% is equals to 80. अगर 1% is equals to 80, तो then 6% is equals to 480. Same Assam से 6% equal to 480. And if I add them, now it will be 960. ठीक है. So will you please explain this question? देखो इसमें क्या है कि there are two ways. मतलब एक है falling and एक है rising. ठीक है. Whenever we count this, ये वाला we are just counting the falling वाला पार्ट, नीचे जाने वाला पार्ट निकाल रहे हैं हम लोग. That is 1500. बट ऐसा नहीं ना कि वो बॉल नीचे जा रहे नीचे जा रहे, वो बॉल एक बार नीचे जाएगा फिर उठेगा, राइट. सो जो अप आएगा वो यहां से आएगा, अप 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 अप. उसके लिए राइजिंग के लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, फॉलिंग के लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा. फॉलिंग का इज 1500. राइजिंग का जो स्टार्ट है वो आएगा 4/5. तो बेसिकली जो ए है इनिशियल फॉर राइजिंग दिस इज इक्वल्स टू 240. तब जाके वो 240 आएगा. ठीक है. ओके 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 ओके, कूल. ऑल राइट, एनी डाउट? लेट मी चेक. सो गाइज एक बस आपको अभी मतलब बिफोर वी क्लोज आई गिव यू सम ज्ञान अभी. ठीक है, कि like whatever the level of difficulty is, whatever the level of difficulty of the whole paper is, again as I mentioned, I would like to reiterate, out of 20 questions, ठीक है, out of 20 questions, considering it is LOD 1.5 of the whole paper, I'm saying पूरा पेपर 1.5 होगा,
तो भी LOD1, LOD2 and LOD3, you will definitely get around 11 to 12 questions from LOD1, 12 questions, let's say, to be on the simple side. LOD2 4 questions and LOD3 4 questions. ठीक है, अभी लेट मी क्विकली रिवाइज अपना जो फ्लूक वाला स्ट्रेटेजी है, उसमें क्या करने वाले हम लोग. सो आउट ऑफ 20, सपोज 4 LOD3 है. व्हाट डू आई मीन बाय LOD3? द क्वेश्चंस व्हिच आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. तो ये क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना है आपको कि एक भी एक्स्ट्रा सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए. सो ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, LOD4 LOD3 के 4 क्वेश्चंस, वो चारों के चारों फ्लूक मारो, नॉट एन इशू. अगर हो सके तो स्मार्ट गेस करो, बट ये चारों के चारों क्वेश्चंस, you'll be able to mark these questions within a minute. चारों क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस 1 मिनट में मार्क कर दो. LOD4 के जो क्वेश्चंस है, दिस क्वेश्चंस नीड समवेयर अराउंड 1.5 मिनट्स. ठीक है, तो ये 1.5 मिनट्स में 4 क्वेश्चन हो गए. एंड ये जो क्वेश्चन है LOD1, इसमें से बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन तो LOD0 भी हो गए, जो कि एकदम मतलब चिंदी 20-30 सेकंड्स में भी सॉल्व हो सकते हैं. यहाँ पे 12 क्वेश्चन है. लेट्स से अगर 1 मिनट भी लिया तो भी 12 मिनट्स फॉर दिस, 15 4 6 मिनट्स फॉर दिस एंड 1 मिनट फॉर दिस. सो 12 + 6 + 1 कितना हो गया? 19 मिनट्स in order to solve the 20 questions. ठीक है, तो your ideal time to solve 20 questions is going to be 19 minutes. Okay, just give me a minute. Cool. ठीक है, तो this was about the calculation of your quants. Specifically I'm talking about quants. अगर ओवरऑल थोड़ा ज्ञान देना चाहिए तो, although I'm not a person who should ask for the verbal के मतलब queries, but देखो ओवरऑल अगर 60 क्वेश्चंस है तो LR, QA एंड VA, एज आई मेंशन, QA के लिए 20 मिनट्स, LR के लिए समवेयर अराउंड 25 to 30, एंड जो वर्बल है आपका वो पूरा 10 से 15 मिनट्स में निकलना चाहिए. दिस शुड बी द आइडियल, आई वुड से आइडियल स्प्लिट. ठीक है, मेक श्योर करना कोई भी सेक्शन को अलॉटेड टाइम से ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपने QA से स्टार्ट किया एंड अगर QA का थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज आई मेंशन 1.5 है, थोड़ा सा नॉच अबव है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि QA को 20 मिनट्स अलॉट किए एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग 30 मिनट्स. फिर उसका लोड क्या होगा? उसका लोड आएगा आपका इस पे और इस पे. सो टाइम एलोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड अलॉट उतना ही टाइम जितना आपने इनिशियली सोचा है देने के लिए. ठीक है, सो द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर CET एज वेल. ठीक है, जो CET के 150 क्वेश्चंस होंगे, एज आई मेंशन 1 MPM का रूल अप्लाई होगा, 1 मार्क पर मिनट. सो 150 क्वेश्चंस कलेक्ट करने के लिए 150 मिनट्स आर मोर देन इनफ. एंड इफ यू हैव द एक्यूरेसी ऑफ 80, 85, 90, तो मतलब इट्स मोर देन 140 marks, which will be able to fetch you somewhere around 99.9394 percentile, and which will be which help you basically in order to get into JBIMS. So let me quickly check if I am having some queries on chat, otherwise I'll be ending the session. So नहीं, don't worry Tanya, not like a lot of questions are expected from this particular topic. Don't worry, एक आध टॉपिक के लिए अभी पूरा दिन देना is also not suggested. So वो है. ठीक है, so guys, I hope you liked the session. It was a whole of a marathon, I would say, for me as well. So we'll stop now, and I think Ketan sir will be taking from this point, and I think this was helpful. I hope this was helpful and you guys have learned at least 60-70% आया होगा कुछ तो मतलब दिमाग में कि
कैसे एलओडी होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे लीव करना है, कौन सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड है, क्या लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से लेवल के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कैसे अलॉटेड टाइम में अलॉटेड टाइम में मतलब पूरा एक सेक्शन निपटाना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज डू वर्क ऑन दैट, एंड द ओनली I would say guidance or only tip from my end after this is just be calm on the D-Day. ज्यादा सोचो मत, ज्यादा मतलब फर्स्ट स्लॉट का इम्पैक्ट सेकंड स्लॉट पे नहीं आना चाहिए आपके। जो भी फर्स्ट स्लॉट गया वो गया, अभी आपको फोकस करना है बस कि मतलब बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट करना है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है। एंड अगेन जस्ट द लास्ट थिंग, इफ इट इज अ डिफिकल्ट पेपर फॉर यू, if it is a time consuming paper for you, it's going to be a time consuming paper for everyone, ठीक है। So do remember that, and I wish you like all the best for the exam for tomorrow's slot. And if you have like, we will definitely connect after this connect after that slot, tomorrow slot, and we'll discuss what went right and what went wrong, and accordingly will be helpful, it will be helpful for you for the next upcoming slots. So with this, I'm stopping the session, and Ketan sir, please take forward from this. Thank you so much. Bye bye. No, I think Abhishek, we are done for the day. I think students have worked hard. उनका भलाई होने वाला है, there is no doubt about it. And guys, I hope यार ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते कमेंट डाल देना, है ना। 4.5 घंटे की सेशन हुई है, मुझे लगता है ये पहली बार ही हमने इतनी अच्छी मैराथन रन करी है यूट्यूब पे फुल फ्लेजेडली मेरे ख्याल से। एंड नाउ आपको ये चांस भी मिला होगा कि आपने हमारे कैट के फैकल्टीज तो देखे हैं, आपने आज नॉन कैट के फैकल्टीज भी हमारे देख लिए। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग 4.5 घंटे बैठे एंड पूरा सेशन आपने कवर करा। कंटेंट एब्सोल्युटली एट पार विद कैट स्नैप एग्जामिनेशन। सो लोड मत लेना, मेरी वीडियो आएगी, मैं अभी आपकी वीडियो के लिए ही काम कर रहा हूँ, जस्ट वर्किंग ऑन द डेटा सो दैट आई कैन गिव अ वीडियो टू यू ऑल टुडे इवनिंग, सो दैट आप कल के लिए रेडी हो जाओगे। बस यही है, ऐसे सपोर्ट करते रहना। आई एम वेरी श्योर आपका पेपर अच्छा जाएगा। यू गाइस आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू गाइस आर वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने वो देखा है। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम एंटायर C2C मेंटर्स। कल फाड़ के आएंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिलेगी अभी बहुत जल्दी जल्दी। आई एम जस्ट गोना गेट इट रिकॉर्डेड एंड अपलोड इट ऑन द चैनल। बाय द वे, थैंक यू सो वेरी मच। एंड भाई जाते जाते ना एक अच्छी कमेंट डाल देना मेरे फैकल्टीज के लिए, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। आने वाले दिनों में स्नैप 3 के लिए भी हम एक मैराथन लेके आएंगे, 6 घंटा करेंगे उस मैराथन को। ये 4.5 था, वो 6 घंटा करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।